मूर्ति को जलाधिवास कराया जाएगा, मूर्ति को जल में बिठाया जाएगा। उसके बाद क्या कुछ होने वाला है 22 जनवरी तक, और आज अगर ये हो रहा है तो कल और परसों फिर क्या क्या विधि विधान? कल जो है भगवान अपने मंडप में अग्नि का प्रकट्य होगा, अग्नि प्रकट की जाएगी। वो अरणि मंथा एक विधि होती है, उससे यज्ञ में अग्नि प्रकट करते हैं और उस दिव्य अग्नि को जो है, जो 9 कुंड हमारे यहाँ बने हुए हैं, उन 9 कुंडों में वितरित किया जाएगा। और उसके बाद नवग्रहों की पूजा पहले होगी और नवग्रहों की आहुति, एक कुंड पर 4 ब्राह्मण बैठ करके नवग्रहों की शांति होगी। वहाँ से ये हवन कार्य कल से प्रारंभ होगा। उसमें प्रतिष्ठा का भी होम है, राम जी के नाम से भी आहुतियाँ पड़ेंगी। ये सब कार्य कल से प्रारंभ होगा। और आपको मैंने जैसे बताया 12 अधिवास हैं, कभी फूलों में, कभी ये सुबह शाम करके इसको डिवाइड करके हम लोग ये 21 तारीख तक करते रहेंगे। और फिर एक दिन 21 तारीख को जो है भगवान का 96 कलशों से स्नान है। तो उन कलशों में आपने पता होगा कई तीर्थों के जल आए हुए हैं यहाँ पर। तो सारे भारतवर्ष के तीर्थों के जल होंगे, वृक्षों के पत्ते होंगे, फूल होंगे और फल होंगे और नवरत्न पंचरत्न ये सब जो हैं, इन सबको डाल करके भगवान को स्नान कराया जाएगा। तो उस स्नान के बाद भगवान जो है रात को 21 तारीख की रात को एक उनके लिए पलंग बनाया गया है, उसमें वो शयन करेंगे और फिर सुबह उठ करके प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 11:30 बजे के बाद से शुरू हो जाएगा। जो परिक्रमा की बात की जा रही थी कि मूर्ति को परिक्रमा पहले कराई जाएगी, उसका क्या मान्यता है और कब वहाँ पे होगी, किस तरह से ये परिक्रमा की मान्यता यह है कि भगवान पूरे शहर को जहाँ जहाँ घूमेंगे सारे तीर्थों को, देवालयों को भगवान देख लेते हैं। एक प्रकार से ये भावना है। जन सामान्य भी उस मूर्ति को देख लेता है, लेकिन प्रैक्टिकली वो यहाँ संभव नहीं था। तो इस दृष्टिकोण से उस कार्यक्रम को मंदिर के अंदर ही कर लिया गया है, मतलब शास्त्र विधि भी हो जाए और उसका वो भी ना हो, तो वो कार्यक्रम हो गया है। तो कल शाम को ये कार्यक्रम हुआ था 4 बजे। मूर्ति को पालकी में रख करके एक सुंदर पालकी बनाई गई थी और वो पूरे मंदिर के चारों तरफ उसकी एक परिक्रमा करवाई गई। तो ये कार्य कल संपन्न हो चुका है। गर्भगृह में मूर्ति को अब रख दिया गया है और उसको जो आंख पे पट्टी बांधी होती है उसके ऊपर भी कुछ बताइए कि अभी आंख पे पट्टी बांधी हुई है, कब खोली जाएगी, किस तरह से खोली जाएगी? ये पट्टी बांधी गई है, ये जिस दिन शाम को 96 कलशों से अभिषेक होगा भगवान का, उसी दिन ये मूर्ति शास्त्र के दृष्टिकोण से ये पट्टी खोली जाती है। लेकिन यहाँ भगवान का जो प्रतिष्ठापना कार्यक्रम है 22 तारीख को है, तो मुझे लगता है सर्वसामान्य को वो दृश्य देखने को मिलेगा। 22 तारीख को ही भगवान का नेत्र, मतलब सभी लोग पर्दा खुलेगा और सब लोग पहली बार जब देखेंगे भगवान को, तो वो 22 तारीख को ही, जिस समय माननीय प्रधानमंत्री जी आएंगे, वो जो विधि होगी उस दिन प्रतिष्ठा की विधि होगी, उसी समय देखने को मिलेगा। वो आईना दिखाएंगे उसको। जी। और अभी गर्भगृह में मूर्ति रख दी जा चुकी है, परिक्रमा वगैरह अंदर हो चुकी है? जी, ये सब कार्यक्रम अंदर हो चुके हैं और बस कुछ ही क्षणों में वहाँ पर कार्यक्रम प्रारंभ होने वाला है। We are getting breaking news from Haryana right now, viewers, where the Aam Aadmi Party is battling a mass exodus. Now, after Gujarat, Haryana top leader has now quit the party with 46 other leaders. Developments coming days after Aam Aadmi Party's tie-up with the Congress party. That is the big update. We're getting it right now. I have with me my colleague Amandeep, who's joining us live from Chandigarh right now on the broadcast. Amandeep, of course, it's a serious piece of news coming in, and a lot of concerns for the Aam Aadmi Party. We're seeing that Aam Aadmi Party is facing an exodus, and this, of course, seems to be a fallout of the tie-up between Aam Aadmi Party and the Congress. Well, absolutely. The problem is that the Ashok Tawar, who was a very senior leader of Aam Aadmi Party, and he left the Congress, joined Aam Aadmi Party. When Aam Aadmi Party has joined the hand with Congress Party, that was the point that he stepped down from the campaign committee chairman of the state of Haryana. Ashok Tawar was recently joined, and along with Ashok Tawar, there are 47 others who were joined, who were in Aam Aadmi Party, and now all of a sudden, after this Indie Alliance, when they have joined the hands with Congress Party for Chandigarh mayor polls, now they have stepped down from Aam Aadmi Party. So it is a major setback for Aam Aadmi Party, where they are trying to establish their political grounds in the state of Haryana, and before they contest or before they can make any kind of visibility in the state of Haryana, this is a major setback. Ashok Tawar was holding a very important position in Aam Aadmi Party for the state of Haryana. He was campaigning in a very aggressive mode. He was a very active member of Aam Aadmi Party in the state of Haryana, but all of a sudden, when he witnessed the entire situation, that how they have tied up their stitches with Congress Party for the mayor elections in Chandigarh, he decided, along with his
47 members to step down from Aam Aadmi Party, and in fact in his resignation letter he has specifically mentioned that due to Aam Aadmi Party has joined hands with Congress Party, that is the reason that why they have resigned from the party all the responsibilities. Yes. Bilkul. Right, Amandeep, thank you so much for joining us with those details. We'll keep coming back to you for more as the situation is getting serious for the Aam Aadmi Party there. But right now, viewers, it's time for a short break. But before we step into a break, we're getting you some more melodious voices and more devotional voices as we report from Ayodhya in the run-up to the inauguration. Sir, आप भजन सुनाने वाले थे जरा। हाँ, एक हनुमान जी का सुना देते हैं। सब ठौर हनुमंत विराजा, कहूँ प्यारी प्रतिमा कहूँ धाजा, तंत्र मंत्र बहु जंत्र विधाना, सब कर फलदायक हनुमाना, एक बार कही जय बजरंगी, महा उमंग लहई रन रंगी, जय बजरंग बली के नारे, सुनत कपहीं बैरी दल सारे, कह लगी महिमा कहो बखानी, थोरे मह बुझियई सब ज्ञानी, परि हनुमत के चरित तरंगा, नर बानर मिल गए एक संगा, धनुज मनुज हरि बानर भालू, गले मिले जग भयउ निहालू, मिलहि धाय सब सरित मत, हनुमत सागर माही, निज निज चंचल चाल तजी, सकल शांत होई जाही, जाके हृदय अनुराग में अभिमान श्री हनुमान को, ताको कमी का रह जगत में धन्यता ही समान को, राख्यो ऋणी करी आपनो बस मह परम भगवान को, सोशील निधि हनुमान के महिमा सकै करी गान को, नहीं नाम को भय रहत सुमिरत, नाम कपि बल धाम को, भयभीत भूत पिशाच भागे, सुनत हनुमत नाम को, कालहु कपै सुनिहा के अपडर, होत सब ग्रह बाम को, तिहु लोक मानत धाक ऐसो, दास सीताराम को। जय सिया राम। जय श्री राम, नमो राघवाय। So of course it's completely an electrifying atmosphere. Stepping to a short break, viewers. On their side, we'll be right back with our biggest coverage from Ayodhya ahead of the Ram Temple inauguration. Stay tuned. I did something called Pirate Radio, and I remember the craziest thing happened. One day, this RJ Mihir tagged Imran Khan, the actor, saying, if you like English music, you love Malini's nighttime show, and he tagged me. And at that point, my name was Miss Malini because of the blog. This is before the empire, okay? And I said as a joke, haha, Imran Khan would love for you to come host the show with me. And look at the power of social media. Imran Khan replied to that tweet, which is like 140 characters, saying, I'll do it on one condition. If we call it Pirate Radio, and I can play what I want. And I remember staring at my screen, thinking, did he just reply to me? I knew that rush of a celebrity replying then, and I was like, I'll do whatever. I didn't even ask the program director. I said, done. Catch Techno Phantom B Flip 5G presents Women Pioneers of India only on Republic TV. सालों से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते आ रहे हैं परीक्षा पे चर्चा, और फिर एक बार स्टूडेंट्स, टीचर्स और पेरेंट्स होंगे एक साथ, दूर करने एग्जाम्स की टेंशन और चुनने सही डेस्टिनेशन। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ आ गया है परीक्षा पे चर्चा 2024। चलो तनाव पर काबू पाते हैं, जीवन को उत्सव के रूप में मनाते हैं, परीक्षा पे चर्चा में आते हैं। अपनी क्षमता, अपनी प्रायोरिटी, अपनी आवश्यकता, अपने इरादे, थोड़ा हर अपेक्षाओं को उसके साथ जोड़िए। परीक्षा पे चर्चा 2024 29 जनवरी सुबह 11 बजे। देख, इत्तू सी है, थाली तो अनलिमिटेड होनी चाहिए। कैंटीन की थाली है, कोई नीवा भूपा हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी थोड़ी है। मतलब इत्तू भी क्लेम किया तो पूरा बेस कवरेज वापस, अनलिमिटेड टाइम। ये तो मुझे भी चाहिए। जिंदगी को क्लेम कर ले।
भाई इतनी बड़ी टाइल, इतनी बड़ी बड़ी हिट्स आप लोगों ने मुझे दी हैं। टाइल्स तो बड़े होने चाहिए। सुमानी मैक्स टाइल्स, टाइलों का सबसे बड़ा भाई। सुमानी मैक्स टाइल्स, जमीन से जुड़े। Helps beat sensitivity fast. Sensodyne Rapid Relief. मोदी सरकार की गारंटी, महिलाओं के लिए धुआं मुक्त रसोई। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 10 करोड़ गैस कनेक्शन। हमारा संकल्प विकसित भारत। इन टिकटों में राम मंदिर का भव्य चित्र है। कलात्मक अभिव्यक्ति के जरिए राम भक्ति की भावना है और मंगल भवन अमंगलहारी इस लोकप्रिय चौपाई के माध्यम से राष्ट्र के मंगल की कामना है। इनमें सूर्यवंशी राम के प्रति सूर्य की छवि है, जो देश में नए प्रकाश का संदेश भी देता है। इनमें पुण्य नदी सरयू का चित्र भी है, जो राम के आशीर्वाद से देश को सदैव गतिमान रहने का संकेत करती है। मंदिर के आंतरिक वास्तु के सौंदर्य को बड़ी बारीकी से इन डाक टिकटों पर प्रिंट किया गया है। PC Chandra Jewelers presents Diamond Utsav. Get 10% discount on diamond value. ₹100 off on every gram of 18 karat gold jewelry. A short gift on purchase of every diamond jewelry. Offer valid till 4th February 2024. Exchange free jewelry insurance and EMI available. Conditions apply. PC Chandra Jewelers, a jewel of jewels. Pooja, you left the job and still so cool? Bro, new challenges bring new opportunities. Oh, really? Seriously, Rahul, my entire house, now it's an online retail store. Look. Wow. But money? Few years back, I'd invested my Diwali bonus. And now you have LIC's ULIP plan Nivesh Plus. Invest once, get the benefit of both life insurance and maximize returns based on market trends. One sec, Rahul. Madam, you are double cool. केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में पीएम श्री स्कूलों के 404 करोड़ रुपए की लागत से होने वाले आधुनिकीकरण कार्य किया। मैं सबसे पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभारी हूँ। शिक्षा को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के रूप में उन्होंने लागू करते हुए 2020 में पूरे देश को एक नए विजन के साथ आगे बढ़ने की एक नई प्रेरणा दी और उसी श्रृंखला का हिस्सा है पीएम श्री स्कूल की योजना। इसके साथ ही प्रोजेक्ट अलंकार के तहत माध्यमिक विद्यालयों में सुविधाओं के लिए 347 करोड़ की धनराशि भी हस्तांतरित की गई। प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए प्रतिबद्ध योगी सरकार की इस योजना का लाभ प्रदेश के लगभग 5 करोड़ बच्चों को होगा। जब प्राइवेसी प्रोटेक्शन के बिना हो हैकर्स के पास अथॉरिटी, फिर किस बात की साइबर सिक्योरिटी। क्विक हील, आज के लाइफ की प्रायोरिटी साइबर सिक्योरिटी। गोल्ड का स्टाइलिश पंखा सिर्फ हवा ही नहीं देता, आपके आलीशान घर के कोने कोने में ठंडी हवा के झोंके पहुंचाता है। कूल फैंस के स्टाइलिश डिजाइन से घर को सुंदर बनाएं। 5 स्टार BLDC कूल फैन से बिजली भी बचाएं। समय आ गया है घर के पंखे बदलने का और कूल फैंस घर लाने का।
This is Republic Niva Bhupa Studio, your one stop for all the breaking updates. I am Rakshita Mishra. Kia, movement that inspires. मिलके हम पंजाब को रंगला पंजाब बनाएंगे और बिजली के मामले में पंजाब को सरप्लस बनाएंगे। 24 घंटे बिजली रहिंदी है जी, कोई दिक्कत नहीं बिजली दी, सानू कोई प्रॉब्लम नहीं आउंदी जी। जो भी मतलब लोग सरकार नूं टैक्स जमा कराउंदे आ, वो टैक्स ही ये लग रहा है जी, ते सानू संतुष्टि है सरकार तो जी। पंजाब सरकार दा भगवंत मान जी दा बहुत बहुत धन्नवाद करते हैं जी। बिजली दे बिल तो जमा ही मैनू 1.5 साल हो गया जमा जीरो आ रहा मेरा, ते जिहड़े वो लैपटॉप ते अगे पढ़ाइयां नहीं हुंदियां सी बच्चों दियां, जानी दी हुण तां जमा ही भोरा भी नहीं कट के लगता। बिजली का बहुत सोहना सूबा सरकार ने बहुत सोहना काम कीते है। कि गवर्नमेंट तो बनाती लोगों ने, हुण अपनी नैक्सट जनरेशन किवें बनू, अगली पीढ़ी जिहड़ी है उन्होंने आपां किवें उच्चा लेके जा सकते हैं, गरीबां दा जिउण दा स्तर जिहड़ा जीवन उच्चा पद्धर दा किवें चक सकते हैं, ये साडीआं प्रायोरिटीज़ ने। मेरे ते यकीन तुसीं कीता तां यकीन रखियो, मैं तुहाडा यकीन कदे टुटण नहीं दूंगा। उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कर आता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। भाई इतनी बड़ी टाइल, इतनी बड़ी बड़ी हिट्स आप लोगों ने मुझे दी हैं। टाइल्स तो बड़े होने चाहिए। सुमानी मैक्स टाइल्स, टाइलों का सबसे बड़ा भाई। सुमानी मैक्स टाइल्स, जमीन से जुड़े। मोदी सरकार की गारंटी, सस्ती दवाई, अच्छी दवाई, कम से कम 75% डिस्काउंट। अब तक जरूरतमंदों के 23,000 करोड़ रुपए बचे। हमारा संकल्प विकसित भारत। With you this evening, and I suppose in this excitement we are live from Ayodhya Ram ki Padi at the moment, and let's take a look at all the top stories making headlines at this hour before we get you live inputs from the temple town. Ram Lalla's idol set to be moved to the sanctum sanctorum today. All eyes on the grand Pran Prashishtha. But India goes all out to mar India's big moment. Stalin Jr. provokes with mosque demolition remark. Akhilesh Yadav's leader insults Ram Bhakt, says car sevaks fired upon to protect the constitution. Sonia's party leader tries to fearmonger, says Kalyug for Dalits after 22nd of January. Under lens for liquor gate, Kejriwal skips the ED summons again. BJP hits out, asking what is he hiding? And if Congress tie up sparks
mega exodus from Aam Aadmi Party. Top Haryana leader and 46 others quit the party. Ladies and gentlemen, we have a very, very special guest joining us on Republic TV today. He's a former Pakistani cricketer. He is a former Pakistani cricketer. And he's not ashamed of his identity. In fact, one would say he's a bigger Rambak than many, even in India. I have Danish Kaneria joining us on Republic TV for this very special interview. And Danish Kaneria is someone who's extremely proud of his Hindu roots, his identity, and ahead of the Ram Mandir inauguration, he's joining us live. He put out a tweet 2 days back which has gone it's gone viral across India, one of the highest liked tweets in the recent past on the Ram Mandir issue itself. Let me go across to Danish. Danish, first of all, welcome to Republic TV. It's your first conversation with us on our English channel and also on the Republic Media Network. Danish. Thank you so much for having me. You tweeted, and to Danish. everyone, namaskar and Jai Shri Ram to everyone first of all. Yeah. Jai Shri Ram, Danish. Now you said, हमारे राजा श्री राम का भव्य मंदिर है तैयार, अब सिर्फ 8 दिन का है इंतजार, बोलो जय श्री राम. Danish, today, Pakistan is in the news for 3 things. One, of course, Iran has bombed Pakistan. I won't talk about that. Second, there were trolls from Pakistan who were attacking India on Jai Shri Ram on the Mandir inauguration. I won't talk about that right now. My question to you, Danish, while many Pakistani trolls have gone after you for showing your Ram Bhakti when you're holding that flag in your hand, and that's the picture where you're holding that flag in your hand, and I see that you're wearing a Jai Shri Ram t-shirt as well today. I can see that you're wearing a white t-shirt. We've seen your excitement. It's evident in your tweets. It's evident in everything that you say and your support for the Ram Mandir since the Bhumi Puja. And you've put out several tweets on that subject. When you even tweeted something like the beauty of Lord Ram lies in his character, not in his name. You've been a vocal supporter of the Sanatan Dharma, Danish. And you're living in a country where Hindus especially are discriminated against. What does this moment and January 22nd mean for someone like you, Danish? First of all, January 22nd is one of the biggest days which we have been waiting for 500 years. And being a Sanatani, it's my duty to respect Sanatan Dharam. And because born Hindu, I'm born Hindu, I will die Hindu. That's my first slogan, right? And Shri Ram Bhagwan is something very ideology. If you see Shri Ram Bhagwan life, if you see and why did Shri Ram Bhagwan came to earth, he should have got Ravan dead easily, but he showed the people the way of life, all the sacrifices he did in his life. Then he went to 14 verse Vanvas, then Hanumanji met him, and then he came back to Ayodhya. He didn't, when Kaikai sent him to the Vanvas, he came back and Kaikai was sorry that why I did this and did that, but Ram Bhagwan said to her, no worries, you are my ma and you will always remain my ma. So that's a big thing. How much sacrifices and how much loving and bringing the people together. That's all about Ram Bhagwan. Maryada Purushottam. Why we say Maryada Purushottam Ram? Whatever happened throughout 500 years, with the Maryada, we got the Ram Mandir, right? Or everything, the court decided, the Supreme Court decided. And being a Hindu, why should I not praise my religion? Why should I not praise Ram Bhagwan? Why should I not praise Hanumanji? Why everybody, I respect everybody religion. It's my religion. I love it from my core of my heart. So I think nobody should have a problem. People have some problem. I know people start abusing me. They try to threaten me and all that stuff. They do it. But I'm not saying against to their religion or anything against them. It's my Ram Bhagwan. It's my Ram Mandir which is happening. So I'm very proud and very happy for that. So what's wrong in that? Fantastic. Danish,
You call yourself a proud Hindu and a proud Pakistani, but the fact of the matter is, you're sitting in a country which has repeatedly criticized Ram Mandir. You may not be physically seated there right now because I don't know where your location is, whether you're in Pakistan, but they have criticized Ram Mandir. In fact, in 2020, Pakistan had criticized the foundation laying of the Ram Temple. Why is Islamabad so desperate to get into India's affairs when what is playing out in India is after a judgment and is in accordance with the highest court of the law? Why are they so desperate? I don't know why they want to put into all this political thing and why they come into when a Supreme Court, because every judiciary, we respect every judiciary, everything. When everybody was saying, okay, whatever the Supreme Court will say, we will go according to that. When the Supreme Court said it, and we got the few things where some things over there in Ayodhya where Ram Bhagwan things were there. So every evidence showed that there was a Ram Mandir. So why not Ayodhya was the place? Even if we see Ramayana, if we see any religious book, it's always say Ayodhya Ram Bhagwan ki. So what's the question about that? I don't understand. First of all, first you have to read the history, read everything. What are the religious books says? What it says? Where is Ram Bhagwan? Was Janmabhoomi, was Ayodhya. So Ram Bhagwan first came into earth at Ayodhya. So what's the question in that? If you ask some guy who is very educated, who knows about things, he will say, no, it is right. I can only say that. Other than that, whatever they say, I don't care. I don't think that anybody is willing to listen to them, what they are saying. Yeah. Danish, as the consecration ceremony, the Pran Prashishtha is near, and today is a story that we reported here on Republic Media Network. There are some Pakistani social media handles which are spreading hatred. There's some sort of a toolkit, negative content about Ram Mandir. And we broke the story about this Pakistani toolkit earlier today here on Republic Media Network. It's being engineered from Pakistan. There's proof of that. As a Pakistani Hindu, what is your response to such attempts? As a Hindu, I think whatever they have to say, just ignore them. I don't think so. We need, because in our Sanatani Dharam, we are very peacemaking religion. We always love each other. We respect each other. And all this type of things, when they come up with that, just ignore it. Because what will happen, right? It is, history is coming back. So I think, what should I say? I will just ignore it, because most important thing is that we are going into 22nd, the most prestigious day, that Ram Lalla, Janmabhoomi is the occasion, and we should celebrate that. Whatever everyone want to say, just ignore it. I will just ignore it. Yeah. I want to delve into this issue a little bit, Danish, because you recently claimed that you got differential treatment from your own team. Back then it was Shahid Afridi, the captain, who reportedly asked you to convert. And you claimed that team members weren't even eating food alongside you. You were ostracized within the Pakistani team itself. Tell us and our viewers at Republic TV a little bit about that and what kept you going from within, vis-a-vis the pressure, the intimidation, the coercion, if I can call it that. Yeah, everything, as I started playing cricket, everything was good. Everything was going good. Even I had a fantastic captain in Zamamul. He supported me a lot because I performed in every game. I always thought that if I don't perform, I will be out of the team because I'm playing against the odds. Everything is against me. So I have to be in best to continue as performing in every game because I was doing so well. So I broke a Saklan Mushtaq record, Abdul Qadir record, Mushtaq Ahmad record, everyone record I was breaking it. And 261 wicket in 61 test matches. Things were against me when I got this type of things happening. It went later part of the of my career, like in 2007 and 8, this started to grow up pretty much. 2007, 2008 started growing pretty much, and I was performing so well. I won the series. Even not me, even Shoaib Akhtar has quoted that as well.
So I was getting a dish treatment from the place the name which you mentioned. Definitely, he was the main guy who was trying to do several things because he was trying to do. But still, I was performing at that level, and then suddenly, because I was breaking everybody's record, and they thought now Hindu will come on the top because I'm the fourth highest wicket taker still for Pakistan, right? The records you cannot silent the record. The record says that, and some incidents happen, and then Pakistan cricket board really I was so down and so sad that they supported each and everyone who done the corruption in England. They went to jail, they bring them back, they got in the team. Only in my thing, the allegation there, nothing against me was there. And on a false allegation, I was banned. And then Pakistan Cricket Board never ever supported me. So that shows clearly that you see the 5 guys, and after that, so many guys who got caught and got corrupted, they're all back in the team. I didn't do anything in Pakistan international team. I didn't do any single thing. I was working hard. I was performing so well. I have, like, in domestic cricket, if you see my record, I have 1,025 wickets. Like, that's if you ask someone, that's crazy, right? But that was the thing which just disturbed my career, and they have finished my career. I want to say they finished my career, and I just, it's okay. How much is written in my life, that much I will play. But they did very bad to me by not supporting me, which shows that how much hatred they have, how much hatred against the Hinduism. That shows. After me, you tell me how many non-Muslim cricketers played for Pakistan. None. It's been like 12, 13 years, right? So that shows clearly. And I only believe in Bhagwan, and I have faith in Bhagwan. Bhagwan been very kind to me. There is always up and down in life, but still, I'm very proud that my Shri Ram Bhagwan Mandir is coming up. And I hope that somebody will come and take stand, and whatever the ban which is me, that should be squashed. That is the only thing I just wanted to say. Yeah. Yeah, Danish. Yeah. Danish, a few months back, you also posted a video wherein a Pakistani player, I think it was Ahmed Shehzad, who was allegedly trying to convince a Sri Lankan cricketer. That video went viral to convert to Islam. It was from a match, you say, back in 2014. You're talking about the Dilshan and Ahmed Shehzad right? states if you're a non-Muslim and you become... Yeah, he says if you're a non-Muslim and you become Muslim, no matter what you do in life, straight to heaven. The trolls in Pakistan say that you are being opportunistic. So why did you decide to speak now? Sorry, So why... My question to you was, you posted that video, the whole world was talking about it, and people in Pakistan, trolls called you names, they said you were being opportunistic. Why did you decide to speak up and now about this video? Why I wanted to speak it? Okay. So when the thing started going against, I was in the team, I was just keeping my mouth shut, and I was just, what the trauma they were giving me, I was just keeping quiet and just wanted to perform. And then that incident happened, and then I went like, what they did to me. They finished me up, and then not me. It was, I thank to Shoaib Akhtar. He came up, he gave me the power, he gave me the courage to speak on that matter, what happened. And then it started going. That was, see, I'm living in a country where I'm alone over there, right? I have a family and everybody over there. So I cannot be so selfish. I got the courage. I wanted to do it earlier, but things were stopping me. I was getting a bit of scared, and then I said, whatever will happen, I just said Jai Shri Ram, and I will just make this, because I wanted to see, everybody was saying that I'm telling lies. But when I spoke, and then the reality, when the evidences came, that shows that I'm not telling lies, which is truth. But that was the thing. Yeah. Danish, finally,
as a proud Sanatani and a Ram Bhakt, do you plan on visiting the Ram Mandir in Ayodhya? Many viewers, many Indians asking that question, whether you will visit India sometime. Definitely. Why not? It's a Ram Mandir, and Indian Bharat Bhumi is our all Bhagwan, and we have the Yatra over there, so much Teerth Dham over there, so many Dham over there. So we'll definitely come. People were asking me that, did you got the invitation to come to visit for that? It's a Ram Mandir. If you're a Sanatani, you don't need an invitation from anyone. You have to just go. You have to just celebrate. Bhagwan, it's a Bhagwan Utsav. Ram Lalla, Janmabhoomi coming back, and the Pran Prashishtha is going to happen. So whoever is lucky going over there, seeing there, that is amazing. That's a big thing. But I will definitely will come to India and visit Ram Mandir, because very close to me. And Mangalwar, see, the Tuesday Mangalwar is Mangal ka din. Okay, we say Ram Bhagwan born on Mangal Divas, Shri Hanuman Ji, and that's a big occasion. So I'm very close to it. Because from the childhood I've been following Ramayana, I've been watching Ramayana, being a Shri Hanuman Ji Bhakt a lot and following it. And yeah, it's something that it's amazing. That I wish Ram Bhagwan just call me and I will be there, definitely. And definitely I will come to visit Ram Mandir and take the Ashirwad of Lord Ram. Yeah. My final question to you, Danish. When you tweet, it's almost like an Indian tweeting. And the reason I say that is because you stand and you believe in a lot of Indian values, Indian traditions, Indian beliefs. Have you ever thought of an Indian citizenship? See, Indian values and whatever you talk about, it's our Sanatani Dharam. Whatever I see, wherever something is going right, something is doing right, I will always support that. If something in Pakistan, if something is happening right, I will support that. But you see the situation nowadays, you see the politics and everything, nothing is going in the right direction. The economy gone, everything is, the poor are getting poor more, so much getting right. But India is getting higher and higher in every department, if you see. If you see in every department where the economy has gone, where the government has taken India at the highest level. So you have to praise that. It's not that being a Pakistani or Indian or this or that, you follow that. But whoever does good work, being a Sanatani Dharam, as a Hindu is my religion, Sanatani, something is happening good. So I will always praise that. And wherever the innocent will get, the innocent people will get into trouble. I, as a Sanatani, Bhagwan has given me that courage. So I will speak up, and I would like to see more like the Indian cricketers coming up, taking a stand on that and making a huge thing, what is, we call it, to make a voice for the people. Like I always I always tweet on the conversion of the Hindu girls that, yeah, I'm taking up the voice. I should want that more of people, and even the film media, the Bollywood and the Indian sports fraternity also raise voice, and we all raise voice for what is going wrong. Yeah. You ducked my question. Will you be open to an Indian citizenship? Has that thought crossed your mind? Yeah, let's see how the things goes around. Definitely when I visit India. All right, Danish. Fantastic speaking to you, and be safe, Danish, wherever you are in the world. I know a lot of people may not like you. They may hate you for your views, tweets, stands that you often take, especially on religion. And we all know how dangerous it is to have those views and still live in Pakistan or have roots in Pakistan. Be safe, Danish, and thank you for speaking to Republic TV. Hope to see you in India soon. Thank you. Jai Shri Ram. Thank you. कहाँ हो तुम किम? कैसी लगी हमारी एंट्री? अल्टीमेट।
स्विच। कुर्सी की पेटी बंदी है ना, मौसम बिगड़ने वाला है। और अब क्लाइमैक्स। The new Hyundai Creta. Undisputed. Ultimate. मोदी सरकार की गारंटी, हर गरीब का मुफ्त इलाज। 55 करोड़ लोगों को दी हर साल 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की निश्चिंतता। हमारा संकल्प, विकसित भारत। I did something called Pirate Radio, and I remember the craziest thing happened. One day, this RJ Mihir tagged Imran Khan, the actor, saying, if you like English music, you love Malini's nighttime show, and he tagged me. And at that point, my name was Miss Malini because of the blog. This is before the empire, okay? And I said as a joke, haha, Imran Khan would love for you to come host the show with me. And look at the power of social media. Imran Khan replied to that tweet, which is like 140 characters, saying, I'll do it on one condition. If we call it Pirate Radio, and I can play what I want. And I remember staring at my screen, thinking, did he just reply to me? I know that rush of a celebrity replying then, and I was like, I'll do whatever. I didn't even ask the program director. I said, done. Catch Techno Phantom B-Flip 5G presents Women Pioneers of India only on Republic TV. भाई इतनी बड़ी टाइल, इतनी बड़ी बड़ी हिट्स आप लोगों ने मुझे दी हैं। टाइल्स तो बड़े होने चाहिए। सुमानी मैक्स टाइल्स, टाइलों का सबसे बड़ा भाई। सुमानी मैक्स टाइल्स, जमीन से जुड़े। Eat it on time and please ride the bike slowly. Okay. And this is for your safety. अरे, I almost forgot. LIC. This is for our safety. दिल की सुनो। LIC चुनो। LIC हर पल आपके साथ। Breaking developments right now, viewers. This coming in ahead of Ram Temple. Now, just days after Sonia and company boycotted the Ram Temple inauguration, Karnataka unit has now broken ranks. And how Congress leaders have said that no one can stop them from visiting Ram Temple. That is the big update we're getting in. Congress, of course, the top brass has refused, has declined the invitation, but we see that there is division that is open, it's wide open. And Prajwal, my colleague, has spoken to Congress MLA Krishnappa on the Ram Temple. Take a listen into this, viewers. See, first of all, I am Indian. That is the main point. Worshipping God is our own, in our own interest. So there is no question of Congress, this one, that one. We worship all the gods. We participate in every community, every religion functions, whether it is Christian, Muslim or Hindu. We participate in every. See, first of all, I am Indian. That is the main point. Worshipping God is our own, in our own interest. So there is no question of Congress, this one, that one. We worship all the gods. We participate in every community, every religion functions, whether it is Christian, Muslim or Hindu. We participate in every. All right, that was an exclusive conversation. We'll get you more on that. Right now, step into a very, very short break, viewers. Republic TV's live and rolling coverage from Ayodhya continues on the other side of this very short commercial break. Stay tuned. कहीं एक नई रोड ने साइंस को शहर से गांव तक पहुंचाया ताकि पूर्णी
चांद तक पहुंचने का सपना देख पाए। वो काम ही कैसा काम जिसकी खोज किसी को अपनों से दूर ले जाए। सिर्फ इसलिए रंजीत के शहर में भी एक ऑफिस बना है और हमारे जवानों के कदम कभी न रुके। सिर्फ इसीलिए कहीं एक मजबूत पुल बना है। देश के नंबर 1 सीमेंट अल्ट्राटेक में हम मानते हैं कि इंडिया बनता रहेगा तो आगे बढ़ता रहेगा। अल्ट्राटेक सीमेंट बनेगा तो बढ़ेगा इंडिया। क्या है इस परीक्षा पे चर्चा में जो स्टूडेंट्स की एग्जाम स्ट्रेस को दूर कर देता है? क्या है इस परीक्षा पे चर्चा में जो टीचर्स और पेरेंट्स की दुविधा को मिटाता है? क्या है इस परीक्षा पे चर्चा में जो जीवन को उत्सव के रूप में मनाने के लिए प्रेरित करता है? क्या है इस परीक्षा पे चर्चा में जो इसके 7वें एडिशन में 2,26,00,000 लोगों को हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करता है? मिलेंगे सभी सवालों के जवाब जब जुड़ेंगे स्टूडेंट्स, टीचर्स और पेरेंट्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ। परीक्षा पे चर्चा 2024 29 जनवरी सुबह 11 बजे। सर मेंबरशिप होगा पर मैंने तो यूज भी नहीं की। फिर तो वेस्ट हो गई। कैरी फॉरवर्ड कर दो। ऐसा कहाँ होता है? मेरी नीवा भोपाल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में मतलब it lets me carry forward my unutilized base coverage to the next year। कि मुझे भी चाहिए। Whenever I had ice cream or cold water, I would experience a sharp shooting sensation. So I just kept ignoring it. Even my hot chai was giving me the same amount of discomfort. My dentist recommended Sensodyne. So now I can be completely carefree and sip my hot cup of tea. It really works. मोदी सरकार की गारंटी, कोई नहीं रहेगा भूखा। हर महीने 80 करोड़ लोगों को मिल रहा है मुफ्त राशन। हमारा संकल्प विकसित भारत। Ram Lalla's idol set to be moved to the sanctum sanctorum. All eyes on the grand Pran Prashishtha. But Indy goes all out to mar India's big moment. Stalin Jr. provokes with mosque demolition remark. Akhilesh Yadav's leader insults Ram Bhakt, says car sevak spied upon to protect the constitution. Sonia's party leader tries to fearmonger, says Khaliyug for Dalits after 22nd of January.
Under lens for liquor gate, Kejriwal skips the ED summons again. BJP hits out, asking what is he hiding? Congress tie-up sparks mega exodus from Aam Aadmi Party. Top Haryana leader and 46 others quit the party. All right, we are reporting live from Ayodhya today, and with just 4 days to go, viewers, it's of course a festive atmosphere here in Ayodhya. And in fact, I'm getting to know more details now as far as the various, incendiary remarks that are coming in. It's Asaduddin Owaisi who is at it again, and now we are getting to know that Owaisi has said that the Eid holiday was cancelled by the BJP. So that is the big update we're getting in. Asaduddin Owaisi, remember, there have been back-to-back statements from Asaduddin Owaisi in the run-up to the grand inauguration of the Ram Temple. The opposition is going all out very clearly to vitiate this atmosphere ahead of that historic moment that we are all going to witness on the 22nd of January. Asaduddin Owaisi, the AIMIM chief, has hit out at the BJP saying Eid holiday was cancelled by the BJP. Let's take a listen to what Owaisi said. In fact, we'll get you more reactions on that. We'll get reactions on that story, because we have seen, viewers, there are a lot of reactions that have been coming in on Ram Temple from the Indie Alliance leaders as well. And remember, there is a partial holiday. There's a partial holiday on the occasion of the inauguration of Ram Temple. There is going to be half day. So there are many of such, celebratory preparations of celebration that are coming in, but it seems that Owaisi, it's not going down well with Asaduddin Owaisi and the likes, and now we are getting to know that this is the latest reaction Owaisi is giving after. All right, my colleague Aneri is joining us on the phone line for more. Aneri, yet another reaction from the opposition. Asaduddin Owaisi is at it again. He has given out a divisive statement saying that BJP did cancel Eid holiday. Well, that's right, Rakshita. What we are seeing right now is that as the central government has announced a partial holiday on the 22nd of January in view of the Pran Prashishtha of the Ram Mandir, now we are seeing that AIMIM chief Asaduddin Owaisi has now once again slammed the BJP. He has hit it out at the Bharatiya Janata Party and the central government, where they say that Miladun Nabi holiday was cancelled by a BJP state government. A constitutional authority did away with a 30-minute break on Fridays for namaz, and this is the kind of development for all aspirants for none except for majority, and this is what Asaduddin Owaisi has to say. Well, remember how AIMIM chief has been hitting out at the BJP, at the central government, and also he has been, well, this is not the first time where he has been attacking on the central government or the Bharatiya Janata Party, but earlier also he has been stating, he has given such statements. Right, Aneri, of course. Thank you so much for joining us with those details. But, viewers, no matter how much, the leaders from the opposition will try to deter and will try to vitiate the atmosphere, viewers, we are here in Ayodhya where all the action is happening, and we have many devotees around us, and we have also some ladies. Ma'am, आप कहाँ से आए हो? मैम यहीं पास लोकल से ही हैं हम लोग। और यहाँ पर अयोध्या जो कि आपने देखा ही होगा। जी। तो अयोध्या को आपने किस तरह से बदलते हुए देखा है, और 22 तारीख का सबको इंतजार है? जी, बहुत ज़्यादा इंतजार है सबको। जी। और क्या कुछ तैयारी है, क्या आप दर्शन के लिए वेट कर रही हो? बहुत बेसब्री से। जी। और क्या कुछ बदल गया अयोध्या में? पूरी तरीके से सब कुछ। पूरी अयोध्या बदल गई है। जी। शुरू से हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं, मतलब हम लोग 20 साल हो गए, मेरी शादी यहाँ हुई। पूरी तरीके से मतलब हम लोग खुद आते तो मतलब कुछ ना कुछ रोज नया नहीं कर रहा था। पहले बिल्कुल आने का मन नहीं कर रहा था। कुछ नया देखने को मिलता है। अब इस समय हम लोगों के लिए रोज कुछ ना कुछ नया है।
और जिस तरह से देख रहे हैं कि यहाँ पर जो राम मंदिर है उसको लेकर अब जो यंग लोग हैं उनको भी बहुत कुछ जानकारी मिलने लगी है, बहुत कुछ सीख भी मिल रही है उनको राम से, और तमाम तरह के पॉलिटिक्स चल ही रही है एक तरह से, लेकिन उससे लगता है आपको कुछ असर पड़ रहा है? कुछ नहीं असर पड़ेगा, नहीं असर कुछ नहीं पड़ेगा, असर पड़ेगा बहुत तेजी से पड़ेगा और शुरू भी हो चुका है असर पड़ना। किस तरह से पड़ेगा? बच्चे जाग रहे हैं, सब हम लोगों के छोटे छोटे बच्चे हैं, वो उनमें अब ये जज्बा है कि हाँ राम 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 जाग रहा है। बहुत बदल रहा है, बहुत बदलाव आया है, पहले से अब में बहुत बदलाव आया है और आएगा, अब बहुत बदलाव आएगा। बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात, धन्यवाद। नहीं बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। So as you can see, the people are very excited, and you know everybody is queuing up here at Ram Ki Pedi where we are right now. There will be a very beautiful music and light show also that will happen here, and there are devotees who are queuing up, who are gathering up on the ghats of Saryu River. We'll also show you visuals from another vantage point of the Saryu River, because it gets very beautiful in the evening. There is going to be the Saryu Aarti, also the famous Saryu Aarti that takes place every evening around 6 p.m. in the winters at least, and we will get you the latest and the live inputs on that. But remember viewers, the countdown has just begun. We are seeing there is heavy security deployment. The politics is at its peak, and now we are of course getting you all the latest reports from Ayodhya, because all the action is taking place here. We are talking about now the Bhog of Lord Ram. There are devotees arriving, and Bhog is prepared for thousands who will be visiting the temple, and they will be made from the offerings that will be given to the temple. So here's a report on that. The entire nation is awaiting the 22nd of January, a very special moment. In fact, we're trying to capture with our cameras from where we are standing right now. In Ayodhya, in fact, this is the beginning of the Chappan Bhog that will be made for the 22nd of January, after which it will, in fact, as a prasad, will also be distributed in the rest of the country. Let's take our viewers through as to what exactly is going to be made here, because you can see that the puja, in fact, of these particular vessels had also just been carried out. You can see buckets full of ghee that is kept here, and along with that flour as well. There are laddus being made as we speak. That is the first part that is going to be made. The cooks, the halwai as we call it, are in fact hard at work. We will try to speak to some of the officials here to help us understand better as to how exactly all of this prasad is also going to be made, and how it is going to be distributed in the rest of the country as well. So because as of now we are looking at laddus. Sir, हम देख रहे हैं कि बनाए जा रहे हैं, हलवाई लोग सब काम कर रहे हैं, पूजा अर्चना हो चुकी है, ये जो उनके बर्तन है उनकी पूजा भी हो चुकी है। थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों के लिए क्या कुछ बनने वाला है छप्पन भोग में, क्या कुछ प्रसाद की तरह बने? देखिए, अभी यहाँ पर हमारे ये जो भोग स्टार्ट हो रहा है बनना, उसमें यहाँ पर बूंदी प्रसाद बन रहा है। ये पूरे देश में वितरित होगा और इसकी 3 से 4 हफ्ते की लाइफ होगी, जिससे पूरे देश में आसानी से चला जाए और सभी राम भक्तों को मिल जाए। इसमें हम प्रयास कर रहे हैं कि अलग अलग हमारे जो स्थान है वहाँ पर 56 भोग बन रहे हैं, और उसमें क्या है कि सभी लोग अपने प्राण से लगे हुए हैं भव्यता और दिव्यता के साथ प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में। तो जो सारे भोग बन रहे हैं वो भी बहुत दिव्य और भव्य बन रहे हैं, जिससे कि वो सभी की फीलिंग्स उसमें ऐड हो सकें, और पूरे देश में जो राम भक्त हैं, राम को मानने वाले हैं, सीताराम सरकार के फॉलोअर हैं, उसमें वो सब अच्छा रहे। इसके लिए अभी श्री राम जी की ननिहाल जो दंडकारण्य में है, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और उड़ीसा का जो क्षेत्र है, वहाँ से भी कुछ सामान आया है, और जनकपुर और सीतामढ़ी जो माँ सीता का माँ भूमिजा जिनको हम कहते हैं, धरती पुत्री, उनके मायके से भी कुछ सामान आया है। कहीं से मेवा आ रही है, कहीं से घी आ रहा है, कहीं से कुछ आ रहा है। तो ऐसे करके संपूर्ण भारत का प्रतिनिधित्व यहाँ हो रहा है, और विश्व के अनेक देशों से भी लोगों ने अपना सहयोग किया है। उन सब जो कुछ लोगों ने अपनी भावनाओं से जो अयोध्या में लेकर आए थे, उसका भी अब इसमें उपयोग हो रहा है, जो 56 भोग बनाया जाएगा, और ये 22 जनवरी को लोगों को दिया जाएगा और उसके बाद भी भेजा जाएगा। उसमें क्या कुछ बनेगा? और ऐसा है, जो भी कुछ बन रहा है वो सब प्रभु की इच्छा और कृपा से है। उसमें हम लोग तो एक माध्यम है, और
वो जो प्रभु चाहेंगे वो सारी चीज़ें बनेंगी। अभी क्या है, क्या क्या बन रहा है, ये राम जी की कृपा है। वो जो जब वितरित होगा तो सारा देश देखेगा कि क्या क्या चीज़ें बनी है और क्या भोग प्रभु को अर्पित हुआ और क्या वितरित हुआ। इस वक्त यहाँ पे खाली अभी लड्डू बनाए जा रहे हैं। जी जी जी, यहाँ ये भोग बन रहा है और बाकी जगह पर और भी चीज़ें हैं। So you can see, Shivangi, you know how essentially the preparation is going on, because this is the first beginning of, in fact, the prasad that is going to be given to the devotees from 22nd of January, after which will be distributed in the rest of the country. That has now begun, and in fact there was a puja that was carried out of all of the vessels, and now the cooks and the halwai in fact are hard at work. They're making the prasad that will be distributed not just to the devotees who will be able to be in Ayodhya on 22nd, but also in the rest of the country. Time for getting you more updates right now, viewers, from Ayodhya. Central government announces half-day closing till 2:30 p.m. on 22nd of January at all central government offices, central institutions and central industrial establishments throughout India on the occasion of Ram Temple Pran Prashishtha ceremony. City of Ayodhya is being decked out with flowers ahead of the Pran Prashishtha ceremony of Ram Temple. Inauguration, of course, on the 22nd of January. UP Minister Jaivir Singh handed over 10,000 famous glass bangles from Firozabad inscribed with Jai Shri Ram written on it. Shri Ram Janmabhoomi Kshetra Trust General Secretary Champat Rai. Prime Minister Modi releases commemorative postage stamps on Sri Ram Janmabhoomi Mandir and a book of stamps issued on Lord Ram around the world. Components of the design include the Ram Temple, Chaupai Mangal Bhavana Mangalhari, Sun, Saryu River and sculptures in Ram's temple. Goa Chief Minister Pramod Sawant said that cleanliness drives in all temples of Sakali constituency has begun. To celebrate the auspicious inauguration of Ram Temple, Goa government has declared a public holiday for government employees. And Ram Janmabhoomi Teerth Kshetra Chief Priest Acharya Satyendra Das explained the Acharya Varnam ritual. We'll tell you the details of it on the other side. मारुति नाम रखा गया था। आप बनारस से जानते हैं, यहाँ पर हमने 25,000 घरों में सोलर लगाने का वो बीड़ा मोदी जी ने उठाया है। तो आप लोग रिक्वेस्ट करें तो हर घर सोलर रखना है और आप लोग दुर्गापुर में जहाँ जहाँ चाहें वहाँ जगह लगवाइए, सरकार को भी दे रही है। All right, viewers, we are getting you non-stop coverage from Ayodhya, and it is not just the consecration ceremony, not just the 22nd of January, but the entire development and the entire trajectory that Ayodhya has in fact taken and is moving towards, because we are looking at a lot of projects that have been put in place, in motion in fact already. We are reporting from the banks of Naya Ghat in fact, and we also have seen that there is a new boat that has also been has now started running, the solar boat, which has zero pollution, that has been also mentioned. In fact, we were on board of this boat just a few minutes ago. Let's take a look at that report to understand how entire Naya Ghat is visible from the boat, how the people in fact are enjoying it. Let's take a look. We are on board of. We are looking at several of the people, in fact, who have come to Ayodhya, taking a ride in this boat as well. Let's get in a word from the people who made this project possible, as to understand what is essentially the special features of this boat as well. Thank you so much, sir, for speaking to us. If you could speak to us a little bit and walk us through the special features of this boat that has now started running at the Naya Ghat. Thank you. I'm Sandeep here, and we are from the Electric Mobility and Waterways Group. The idea for us is that we want to provide the electric mobility in the sense that you see on the roads. We want to do that for the rivers, ponds, seas, etc. That's our focus. Under that initiative, when we had reached out with our presentations, and the government of Uttar Pradesh took the initiative through their agency UPNEDA
and that's how the whole thing came about, and the designs and etc. were presented, and they okayed, and we came to a situation where they okayed the project, and here we are in a span of just about 7 months from the initiation to the finished product. We are here, and this is basically a 30-seater boat with 2-member crew which will run. It is partially powered by solar and partially by grid electricity, and it will run for about 6 to 7 hours, and carrying all the passengers, that is, and we'll do some 45 minutes to 1 hour rounds as per what we are deciding with the government of Uttar Pradesh, which will be done by the tourism ministry, here, and they're going to take care of it further. Now, I would like to also emphasize that this group that we're talking, EMW group, and part of that is coming from the physicality of the boat, and we have Mr. Sunny here, who is the managing director of Sunny Boats, and they have made the boat in FRP construction as per IAS approval drawings and designs. They have a 35 years experience in doing that. And then for the electric propulsion, we have the partners with Ra Source, which is based on Chennai. They are doing the solar panels as well as the electric propulsion system here, which is what is running the whole thing. And together, it is our objective as EMW group that we want to provide and facilitate electric mobility on waterways of all kinds, and come to a very eco-friendly, pollution-free, sound-free kind of an experience for all the... Absolutely. So on that note, sir, if you could also walk us through what has the boat been made of, and how essentially the boat had been made. What are the special features of this boat? As we speak on the Naya Ghat that we are taking a ride in this boat. Today, in fact, it has started. So walk us through the details. This is a boat constructed in 6 to 7 months time. These are eco-friendly, totally eco-friendly boats. These are pollution-free and noiseless. That is the speciality of this boat. This boat cruising speed is 5 to 6 knots, and maximum speed is 9 to 10 knots. And these are charging with a one full charge is a 4 to 5 hours is the running time. So let's also try to get in a word from the passengers here, because they are in fact been here. In fact, they are the ones who are taking the ride in this boat as well. Because this is not just about the temple. We are looking at the overall development of Ayodhya. Let's try to get in a word from them. आप लोग बताइए, आप लोग यहाँ पर आए हैं अयोध्या में, कहाँ से आए हैं और किस तरह से अयोध्या का माहौल लग रहा है? Sure. I'm Alankrita. I'm from MP Riva, and I'm so blessed to be here. You have no idea. I know the rush and the feeling of this energy is around the world, but to be here at this place at this time is wonderful. Jai Shri Ram. Yeah. Have you come to Ayodhya before? How are you looking at? So how are you looking at the changes in Ayodhya? Because we have projects like this one that you're on board of. That we are looking at eco-friendly boats that are also running on Naya Ghat now. So these are some of the projects that are happening. How do you experience the city now? Okay, so I have also been to Allahabad and here, so I can compare both of these places. So I know here the atmosphere is not so like people have started investing right now. And I'm so happy that they are doing it, because the common people, they never got the opportunity that they deserved. So thank you to Ram Lalla all over again. Because of them, we can see all these changes that is happening here. So, मैम आप भी मुस्कुरा रही हैं. Would you like to add something? कुछ कहना चाहेंगे कि अयोध्या का किस तरह से रूपरेखा बदल रही है, जिस तरह से हम प्रोजेक्ट लाइक दिस वन जो हम देख रहे हैं, रनिंग ऑन नया घाट, कई सारे घाट को डेवलप किया जा रहा है, कई सारी चीजें नई आ रही हैं, क्या कुछ कहेंगे? हाँ, ये जो अयोध्या का रूप रेखा जो बदल रहा है, ये एक आश्चर्यचकित चीज़ें हैं जो राम जी का पुनर्प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है यहाँ पर, और उससे पूरी प्रकृति बदल रही है. और आज एक एनर्जी सबके अंदर है राम लला को लेके. हमारे केवल यहाँ पर हिंदुस्तान में नहीं, फॉरेन में भी इसकी बहुत ज़्यादा चर्चा भी हो रही है, और हर जगह राम ही राम हो रहा है. जय श्री राम. And we would also like to show you the banks of, in fact, the Naya Ghat, and as essentially how the entire riverfront project is also being developed here, and how, in fact, the master plan for Ayodhya is also being made. We'll try to get in some more words from the passengers and the gentlemen here. Sir, आप बताइए क्या कुछ कहना चाहेंगे अयोध्या का जो डेवलपमेंट के बारे में, या अगर आप पहले आए हैं तो इसके कंपैरिजन में किस तरह से अयोध्या का माहौल भी है इस समय पे जब 22 जनवरी पास आ रहा है? हमारा तो ये मानना है, अगर धरती में कहीं स्वर्ग तो अयोध्या से ही शुरुआत है इस स्वर्ग की. और राम लला जी का मंदिर बन रहा है, राम लला जी आ रहे हैं, और स्वर्ग पूरे
देश में और पूरे विश्व में एक स्वर्ग का आगमन हो जाएगा। So that essentially, बस राम जी आ रहे हैं, इससे बड़ी खुशी क्या होगी। हम लोग अहो भाग्य की जो है यहाँ अयोध्या में आए हैं और राम लला जी के साक्षी बन रहे हैं कि आ रहे हैं। So that essentially is, the sentiment here on the ground, at least in Ayodhya. And it's not just about the temple, but also how people are witnessing the entire city, experiencing the entire city, looking at the development that is happening in the city with the projects like this one that we are on board of, that helps us understand essentially how the direction of Ayodhya has been set and set in motion, in fact, and we are only seeing this getting amplified over the next few years as well. With video journalist Vipin Mori, I'm Priyanka Sharma, reporting from Ayodhya for Republic. Reports from each and every corner of Ayodhya. This is the dusk. The sun is setting. People are taking a break. You can see that on the banks of the Saryu River, they are taking a break. And of course, we will be bringing you each and every part, each and every update as far as 22nd January goes. Stay tuned to Republic. We'll be back after a very short break. पता है ये लंबी सी मेट्रो लाइन क्यों बनी? सिर्फ इसलिए कि पापा जल्दी घर पर आए और ये दोनों उनकी गोदी में छलांग मार पाए। कहीं एक नई रोड ने साइंस को शहर से गांव तक पहुंचाया ताकि पूर्णी चांद तक पहुंचने का सपना देख पाए। और हमारे जवानों के कदम कभी न रुके, सिर्फ इसीलिए कहीं एक मजबूत पुल बना है। देश के नंबर 1 सीमेंट अल्ट्राटेक में हम मानते हैं कि इंडिया बनता रहेगा तो आगे बढ़ता रहेगा। अल्ट्राटेक सीमेंट बनेगा तो बढ़ेगा इंडिया। मिलके हम पंजाब को रंगला पंजाब बनाएंगे और बिजली के मामले में पंजाब को सरप्लस बनाएंगे। 24 घंटे बिजली रहिंदी है जी, कोई दिक्कत नहीं बिजली दी, सानू कोई प्रॉब्लम नहीं आउंदी जी। जो भी मतलब लोग सरकार नू टैक्स जमा कराउंदे आ, वो टैक्स ही ये लग रहा जी, ते सानू संतुष्टि है सरकार तो जी। पंजाब सरकार दा भगवंत मान जी दा बहुत बहुत धन्नवाद करते हैं जी। बिजली ਦੇ ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਜਮਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜਮਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੈਪਟਾਪ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਜਾਨੀ ਦੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਮਾਂ ਹੀ ਭੋਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ। ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤਾਂ ਬਣਾਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣੂ, ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਉੱਚਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਜਿਉਣ ਦਾ ਸਤਰ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਉੱਚਾ ਪੱਧਰ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀਜ਼ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਰੱਖਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਯਕੀਨ ਕਦੇ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦਊਂਗਾ। I want to soar above the skies and fulfill my responsibilities. With LIC. Paid your LIC premium? On time. दिल के सुनो, LIC चुनो। LIC हर पल आपके साथ। केंट से पानी होता है 100% प्योर। केंट आरओ प्योरिटी दिखाता भी है। केंट देता है सबसे शुद्ध पानी। मोदी सरकार की गारंटी, हर घर पहुंचेगा नल से जल। अब तक 13.5 करोड़ से अधिक नल कनेक्शन। हमारा संकल्प विकसित भारत। इन टिकटों में राम मंदिर का भव्य चित्र है। कलात्मक अभिव्यक्ति के जरिए राम भक्ति की भावना है और मंगल भवन अमंगल हारी इस लोकप्रिय चौपाई के माध्यम से राष्ट्र के मंगल की कामना। इनमें सूर्यवंशी राम के प्रतीक सूर्य की छवि है,
जो देश में नए प्रकाश का संदेश भी देता है। इनमें पुण्य नदी सरयू का चित्र भी है, जो राम के आशीर्वाद से देश को सदैव गतिमान रहने का संकेत करती है। मंदिर के आंतरिक वास्तु के सौंदर्य को बड़ी बारीकी से इन डाक टिकटों पर प्रिंट किया गया है। उड़े देश का आम आदमी। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के इस विजन ने रीजनल एंड इंटरनेशनल एयर कनेक्टिविटी को दिए हैं नए आयाम। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश बनकर उभरा है सर्वाधिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला राज्य। भगवान बुद्ध की तपोभूमि कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट शुरू होने के 25 महीने में ही मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में प्रारंभ हुआ है। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम का संचालन। जब नियत नेक हो तो इसी तरह से काम होता है, इसी तरह के नतीजे मिलते हैं। ये अयोध्या नगरी भी तो इसकी साक्षी है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में देश के एविएशन मैप के शीर्ष पर है उत्तर प्रदेश। एयरपोर्ट से ऊंची उड़ान, कनेक्टिविटी को नई पहचान। मोदी सरकार की गारंटी, कोई नहीं रहेगा भूखा। हर महीने 80 करोड़ लोगों को मिल रहा है मुफ्त राशन। हमारा संकल्प विकसित भारत। कैंट से पानी होता है 100% प्योर। कैंट आरओ प्योरिटी दिखाता भी है। कैंट देता है सबसे शुद्ध पानी। मिलके हम पंजाब को रंगला पंजाब बनाएंगे और बिजली के मामले में पंजाब को सरप्लस बनाएंगे। 24 घंटे बिजली रहिंदी है जी, कोई दिक्कत नहीं बिजली दी, सानू कोई प्रॉब्लम नहीं आउंदी जी। जो भी मतलब लोग सरकार नूं टैक्स जमा कराउंदे आ, वो टैक्स ही ये लग रहा जी, ते सानू संतुष्टि है सरकार तो जी। पंजाब सरकार दा भगवंत मान जी दा बहुत बहुत धन्नवाद करते हैं जी। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਜਮਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜਮਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੈਪਟਾਪ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਜਾਣੀ ਦੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਮਾਂ ਹੀ ਭੋਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਲੱਗਦਾ। ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤਾਂ ਬਣਾਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣੂ, ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਉੱਚਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਜਿਉਣ ਦਾ ਸਤਰ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਉੱਚਾ ਪੱਧਰ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀਜ਼ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਰੱਖਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਯਕੀਨ ਕਦੇ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦਊਂਗਾ। It's 5:30 p.m. viewers, and here are the headlines. Ram Lalla's idol set to be moved to the sanctum sanctorum today. All eyes on the grand Pran Prashishtha now. But Indy goes all out to mar India's big moment. Stalin Jr. provokes mosque demolition remark. Akhilesh Yadav's leader insults Ram Bhakt, says car sevaks fired upon to protect the constitution. Sonia's party leader tries to fearmonger, says Kalyug for Dalits after January 22nd. And under the lens for Liquorgate, Kejriwal skips ED summons once again. BJP hits out, asks what's he hiding?
Congress tie-up sparks mega exodus from Aam Aadmi Party. Top Haryana leader and 46 others quit the party. Now viewers, with only 4 days to go for the Pran Prashishtha, we are in fact bringing you all that's happening on the ground. And while the people of Ayodhya and the entire country in fact are gearing up for the 22nd of January, the political comments and the kind of politicization of the 22nd of January is not stopping. Then be it from the Congress party or the Aam Aadmi Party or the TMC, and lately now Akhilesh Yadav's another leader as well, who has made several politically incorrect statements as well as far as the 90s agitation goes. And we are looking at more and more of these statements coming to light by these opposition parties who had earlier also not been able to unite on where their stand had lied on the Ram Temple. And now we're looking at these kind of controversial statements that are coming to light from these leaders of Samajwadi Party, of the TMC, of the Congress Party, even the AIMIM chief Asauddin Owaisi, who's been making several of these statements against the 22nd of January. And we also had the Congress leader Udit Raj today also make these statements about how it is going to be a Kalyug for the Dalits after 22nd of January as well. Let's listen in as to what they are in fact saying about the 22nd January. And of course, viewers, we have been tracking for you all that the political leaders, in fact, have been saying about the 22nd of January. And in fact, we are looking at these political statements that are coming to light from Udit Raj. And today he had, in fact, stated that this is going to be, in fact, a Kalyug for the Dalits after 22nd of January. And although we are looking at the disconnect that these political leaders, in fact, also have from the people of Ayodhya, from the people of the country, because Republic has the largest team of reporters here on the ground in Ayodhya. We have been keeping you ahead on the pulse of the city as well as to what the people of Ayodhya have to say about this political remarks that are coming to light from the opposition. In fact, let's take a look at this report to understand how Ayodhya is completely decked up and completely insulated from the politics that's happening in the national capital. Well, right now I am in Ram Ki Pyari Ghat, and this Ram Ki Pyari has turned into the biggest tourist attraction here. Here in Ram Ki Pyari, you can see the Sarayu Nadi, the Sarayu River here, and lots of people are here. Sadhu, Sant, people from different districts are here, and along with that, we have people from different communities also. We have Shiraj Bhai with us, we have Ashu Bachchan with us. Bachchan ji, aapko swagat hai. आपका भी बहुत बहुत स्वागत है भैया. अच्छा, आशु बच्चन जी is here, along with that Sania Malik is here, and Pura Dholak Bhai is here. तो हमारे पूरे इंडिया को Song baby song by Indore Max Sound DJ Max yo पूरे बच्चन आशु बच्चन जी के साथ. तो आप क्या सुनाना चाहेंगे हिंदी में क्या सुनाना चाहेंगे? पूरे इंडिया के लोग देख रहे हैं, अभी बाहर से भी बहुत फॉरेन कंट्रीज से भी रिपब्लिक वर्ल्ड में लोग देख रहे हैं. क्या सुनाना चाहेंगे उनको? मेरे राम जी आएंगे, मेरे राम जी आएंगे, ओ तू नहीं आया, आ गए सारे मेरे राम जी वे आएंगे, मेरे राम जी वे आएंगे. ओ जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको बुलाएंगे. यूपी में फिर से हम, यूपी में फिर से हम भगवान ही लहराएंगे. दुनिया में फिर से हम भगवान लहराएंगे. योगी जी आए हैं, मोदी जी आए. You can feel the fervor here. You can feel the color here from the Lata Mangeshkar Chowk and adjacent Badi Chowk, the place where the Ram Ki Pauri is here. You can see lots of people, the sadhus here. Baba ji, आप कहाँ से आए हैं?
हिमाचल से आप आए। आप कहाँ से आए बाबा जी? अच्छा, आप लोग यहाँ पे है फिलहाल, कार्यक्रम में आए हैं। सो यू कैन सी साधु संत। माता जी आप लोग कहाँ से? अयोध्या के हैं, जहाँ मेरा मैका है, राम जी के यहाँ से आए हैं, पास में ही रहते हैं आप लोग? मेरा मैका है यहाँ पे, यहीं पैदा हुए हैं। तो राम जी तो वापस आ रहे हैं इतने साल के बाद। हाँ, तो कितनी खुशी की बात है कि हमारे माता पिता आ रहे हैं, इतनी खुशी है कि तो ये दीपावली की तरह है। और क्या, दीपावली मनाया जाएगा। तो जो लोग नहीं आना चाहते यहाँ पे, तो वो लोगों को क्या कहेंगे? राजनीति वाले को? राजनीति वाले राजनीति करते रहे, हमारे माता पिता तो हैं, राजनीति करते रहे। So you can see the flavor here. The locals here are saying that their parents are coming back after so long, and those politicians who want to do politics, let them do politics, but they are going to celebrate the homecoming of Shri Ram, and most importantly Rama coming back after so many years is becoming the biggest event in the world right now. And you can see lots of people just sitting in the banks of Sarayu. The locals here giving shops. There's lots of people who are taking a bath, and most importantly, it's a festival mood here right now, just before the Pran Prashishtha ceremony conducted by Prime Minister Modi. From the banks of Ram Ki Pyari, this is Mayuk Ranjan Ghosh reporting for Republic Ayodhya. Main priest in fact is joining us right now, who will in fact carry out the Pran Prashishtha and the consecration ceremony that will carry out on 22nd of January. But उससे पहले भी कई सारी पूजा अर्चना हो रही है, कई सारे जो इसमें रिचुअल्स हो रहे हैं। कल रात में हमने देखा कि जो मूर्ति है उसको जो मंदिर के अंदर लेके जाया जा चुका है। इसके आगे क्या कुछ अब रिचुअल्स होने वाले हैं, क्या कुछ पूजा अर्चना होने वाली है? आज से प्रधान पूजा प्रारंभ हो चुकी है, मतलब होने वाली है 1:30 बजे। 1:28 का मुहूर्त है, हम लोग वहीं पर अब प्रस्थान कर रहे हैं। तो सभी कार्य की निर्विघ्नता के लिए हमारे यहाँ शास्त्रों में गणेश पूजा का विधान है। तो ये करीब 1:30 बजे सभी पूरे भारतवर्ष से पधारे लोग जो हैं, ये लोग वहाँ उपस्थित रहेंगे और गणेश अंबिका पूजन से इस कार्य का विधिवत प्रारंभ हो जाएगा। आज जल यात्रा जिसे कहते हैं वो भी आज हो रही है, उसमें क्या कुछ होता है, उसमें क्या कुछ विधि विधान? जल यात्रा तो कल हो गई। कल हम लोग सरयू गए थे, वहाँ से सरयू नदी का जल वर्धिनी कलशों में 9 कलशों में भर कर ले आए हैं। आज जलाधिवास शब्द का जलाधिवास होना है। जलाधिवास में मूर्ति जो होती है उसका कई प्रकार से संस्कार किया जाता है। कभी जल में है, कभी अन्न में है, कभी फूलों में है, कभी फलों में है, कभी घी में है। तो ये सब प्रक्रिया आज से आरंभ होगी। उसमें सबसे पहले आज शाम को मूर्ति को जलाधिवास कराया जाएगा, मूर्ति को जल में बिठाया जाएगा। उसके बाद क्या कुछ होने वाला है 22 जनवरी तक? और आज अगर ये हो रहा है तो कल और परसों फिर क्या क्या विधि विधान? कल जो है भगवान अपने मंडप में अग्नि का प्रकट्य होगा, अग्नि प्रकट की जाएगी। वो अरणि मंथा एक विधि होती है, उससे यज्ञ में अग्नि प्रकट करते हैं और उस दिव्य अग्नि को जो है, जो 9 कुंड हमारे यहाँ बने हुए हैं, उन 9 कुंडों में वितरित किया जाएगा। और उसके बाद नवग्रहों की पूजा पहले होगी और नवग्रहों की आहुति, एक कुंड पर 4 ब्राह्मण बैठ करके नवग्रहों की शांति होगी। वहाँ से ये हवन कार्य कल से प्रारंभ होगा। उसमें प्रतिष्ठा का भी होम है, राम जी के नाम से भी आहुतियाँ पड़ेंगी। ये सब कार्य कल से प्रारंभ होगा। और आपको मैंने जैसे बताया 12 अधिवास हैं, कभी फूलों में, कभी ये सुबह शाम करके इसको डिवाइड करके हम लोग ये 21 तारीख तक करते रहेंगे। और फिर एक दिन 21 तारीख को जो है भगवान का 96 कलशों से स्नान है। तो उन कलशों में आपने पता होगा कई तीर्थों के जल आए हुए हैं यहाँ पर। तो सारे भारतवर्ष के तीर्थों के जल होंगे, वृक्षों के पत्ते होंगे, फूल होंगे और फल होंगे और नवरत्न पंचरत्न ये सब जो हैं, इन सबको डाल करके भगवान को स्नान कराया जाएगा। तो उस स्नान के बाद भगवान जो है रात को 21 तारीख की रात को एक उनके लिए पलंग बनाया गया है, उसमें वो शयन करेंगे और फिर सुबह उठ करके प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 11:30 बजे के बाद से शुरू हो जाएगा। जो परिक्रमा की बात की जा रही थी कि मूर्ति को परिक्रमा पहले कराई जाएगी, उसका क्या मान्यता है और कब वहाँ पे होगी, किस तरह से ये परिक्रमा की मान्यता यह है कि भगवान पूरे शहर को जहाँ जहाँ घूमेंगे सारे तीर्थों को, देवालयों को भगवान देख लेते हैं। एक प्रकार से ये भावना है। जन सामान्य भी उस मूर्ति को देख लेता है, लेकिन प्रैक्टिकली वो यहाँ संभव नहीं था। तो इस दृष्टिकोण से उस कार्यक्रम को मंदिर के अंदर ही कर लिया गया है, मतलब शास्त्र विधि भी हो जाए और उसका वो भी ना हो, तो वो कार्यक्रम हो गया है। तो कल शाम को ये कार्यक्रम हुआ था 4 बजे।
मूर्ति को पालकी में रख करके एक सुंदर पालकी बनाई गई थी और वो पूरे मंदिर के चारों तरफ उसकी एक परिक्रमा करवाई गई। तो ये कार्य कल संपन्न हो चुका है। गर्भगृह में मूर्ति को अब रख दिया गया है और उसको जो आंख पे पट्टी बांधी होती है उसके ऊपर भी कुछ बताइए कि अभी आंख पे पट्टी बांधी हुई है, कब खोली जाएगी, किस तरह से खोली जाएगी? ये पट्टी बांधी गई है, ये जिस दिन शाम को 96 कलशों से अभिषेक होगा भगवान का, उसी दिन ये मूर्ति शास्त्र के दृष्टिकोण से ये पट्टी खोली जाती है। लेकिन यहाँ भगवान का जो प्रतिष्ठापना कार्यक्रम है 22 तारीख को है, तो मुझे लगता है सर्वसामान्य को वो दृश्य देखने को मिलेगा। 22 तारीख को ही भगवान का नेत्र मतलब सभी लोग पर्दा खुलेगा और सब लोग पहली बार जब देखेंगे भगवान को, तो वो 22 तारीख को ही, जिस समय माननीय प्रधानमंत्री जी आएंगे, वो जो विधि होगी उस दिन प्रतिष्ठा की विधि होगी, उसी समय देखने को मिलेगा। वो आईना दिखाएंगे उस जी। और अभी गर्भगृह में मूर्ति रख दी जा चुकी है, परिक्रमा वगैरह अंदर हो चुकी है? जी, ये सब कार्यक्रम अंदर हो चुके हैं और बस कुछ ही क्षणों में वहाँ पर कार्यक्रम प्रारंभ होने वाला है। मिलके हम पंजाब को रंगला पंजाब बनाएंगे और बिजली के मामले में पंजाब को सरप्लस बनाएंगे। 24 घंटे बिजली रहिंदी है जी, कोई दिक्कत नहीं बिजली दी, सानू कोई प्रॉब्लम नहीं आउंदी जी। जो भी मतलब लोग सरकार नूं टैक्स जमा कराउंदे आ, वो टैक्स ही ये लग रहा जी, ते सानू संतुष्टि है सरकार तो जी। पंजाब सरकार दा भगवंत मान जी दा बहुत बहुत धन्नवाद करते हैं जी। बिजली ਦੇ ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਜਮਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜਮਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੈਪਟਾਪ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਜਾਣੀ ਦੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਮਾਂ ਹੀ ਭੋਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਲੱਗਦਾ। ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤਾਂ ਬਣਾਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣੂ, ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਉੱਚਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਜਿਉਣ ਦਾ ਸਤਰ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਉੱਚਾ ਪੱਧਰ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀਜ਼ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਰੱਖਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਯਕੀਨ ਕਦੇ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦਊਂਗਾ। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, विश्व की सबसे विशाल खाद्य सुरक्षा योजना, वर्ष 2020 से देश के 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। मोदी सरकार की गारंटी, कोई गरीब अब भूखा नहीं रहेगा। अब अगले 5 वर्षों यानी 2028 तक देश की किसी भी राशन की दुकान से हर लाभार्थी को मिलेगा मुफ्त राशन। मुसीबतों की छुट्टी, मोदी की गारंटी। देख इत्तू सी है, थाली तो अनलिमिटेड होनी चाहिए। कैंटीन की थाली है, कोई नीवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी थोड़ी है। मतलब इत्तू भी क्लेम किया तो पूरा बेस कवरेज वापस, अनलिमिटेड टाइम। ये तो मुझे भी चाहिए। जिंदगी को क्लेम कर ले। क्या है इस परीक्षा पे चर्चा में जो स्टूडेंट्स की एग्जाम स्ट्रेस को दूर कर देता है? क्या है इस परीक्षा पे चर्चा में जो टीचर्स और पेरेंट्स की दुविधा को मिटाता है? क्या है इस परीक्षा पे चर्चा में जो जीवन को उत्सव के रूप में मनाने के लिए प्रेरित करता है? क्या है इस परीक्षा पे चर्चा में जो इसके 7वें एडिशन में 2 करोड़ 26 लाख लोगों को हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करता है? मिलेंगे सभी सवालों के जवाब जब जुड़ेंगे स्टूडेंट्स, टीचर्स और पेरेंट्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ। परीक्षा पे चर्चा 2024 29 जनवरी सुबह 11 बजे। सच्चाई यह है कि राम जन्मभूमि आंदोलन एक ऐसा राष्ट्रीय आंदोलन रहा है जिसमें हर मजहब का साथ रहा। कुछ राजनीतिक दलों द्वारा 80 और 90 के दशक में
वोट बैंक की राजनीति के चलते इसका विरोध हुआ, जो मैं समझता हूं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आज भी वह जारी है। साथियों, मेरा मानना है कि अश्विनी जी आज जीवित होते तो अयोध्या के मंदिर निर्माण को न लेकर केवल वह आनंदित होते, बल्कि वे प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जरूर पहुंचते। और जिस समय राम जन्मभूमि का आंदोलन चल रहा था, तो उस समय मुख्य धारा के अधिकांश समाचार पत्र आंदोलन के साथ नहीं, मगर उस समय भी उन्होंने इस आंदोलन को न केवल खुलकर अश्विनी जी ने समर्थन किया था, बल्कि उस समय की सरकार की नाराजगी का भी उन्हें सामना करना पड़ा। निर्भीकता उनके व्यक्तित्व का मैं मानता हूं कि अभिन्न अंग था। केसरी परिवार में सिंह जैसी निर्भीकता हमेशा हमें देखने को मिली। उनकी पिछली पीढ़ी की तरफ भी यदि नजर डालकर आप देखें, जिस जज्बे को आतंकवादियों की बंदूकें न तोड़ सकी, सरकार की ताकत हिला न सकी, वह मैं मानता हूं कि वह आज भी कायम है। मैं आदित्य चोपड़ा की भी लेखनी से अच्छी तरह पढ़ता हूं, वही तेवर उसमें उनके लेखों में देखता हूं, उनके संपादकीय में देखता हूं, वही तेवर और वही धार जो अश्विनी जी की तेवर थी और उनकी लेखनी की धार वही मैं देखता। मुझे पूरा विश्वास है कि यह कलम न कल झुकी थी, न आज झुकी है और न आने वाले कल में कभी झुकेगी। पत्रकारिता के साथ साथ पंजाब केसरी परिवार अपने सामाजिक सरोकारों के प्रति भी काफी जागरूक और संवेदनशील है। आपने प्रत्यक्ष अपनी आंखों के सामने देखा किस प्रकार से गरीब परिवार की हमारी माताओं बहनों उनके द्वारा सहयोग किया जाए। मैं जानता हूं कि किरण भी काफी लंबे समय से वयोवृद्ध लोगों के लिए एक संस्था केसरी क्लब के नाम से भी चला रही है और उस कार्यक्रम में मैं भाग ले भी चुका हूं। संघ के वरिष्ठ प्रचारक रहे स्वर्गीय मदन दास जी की प्रेरणा से पंजाब केसरी परिवार चौपाल नाम से भी जिस संस्था के माध्यम से आज लोगों को सहयोग प्राप्त हो रहा है। All right, viewers, Rajnath Singh speaking on the Ram Mandir inauguration, and he's saying that Lord Ram is the symbol of good governance. This, of course, happening as we are counting down to the Lok Sabha, in fact, to the inauguration of the Ram Mandir, which is coming up in just a few days. Jan 22nd is the day when the Ram Mandir will be inaugurated by the Prime Minister, and next day it will be open for all the devotees. Rajnath Singh is speaking just ahead of the Ram Mandir inauguration and saying that a Pran Prashishtha is going to be the most historic moment of our lives. So that's the top update coming on Republic TV as we keep getting you more updates. Let's move ahead, viewers, to the other big breaking we're getting for you right now. As we keep getting you more updates, we're getting a big lead come in at this point of time, viewers. Now, this lead is coming in from Chandigarh. Around 200 leaders from Aadmi Party and Congress have joined the BJP today. That is right. Big setback coming in for the India Alliance in Chandigarh, viewers. Big setback coming in. 200, I repeat, 200 Aadmi Party and Congress have joined. Now, 200 leaders from both these parties have quit. I repeat, have quit. Not 100, not 150, but 200 leaders from the Aam Aadmi Party and the Congress, members of both these parties, have joined the BJP today. And this coming in, viewers, as we have seen that the Aam Aadmi Party and Congress are forming an alliance with each other. So this is a very big setback coming in for the India Alliance. And let's not forget that Chandigarh mayor polls are coming up too. So this is a very, very key and important time for this kind of mass exit to happen. Let's go straight to my colleague who's joining us live right now. Amandeep, I'm coming to you. Amandeep, big setback coming in. And look at the time of this mass resignation from the Aam Aadmi Party and the Congress just before the Chandigarh mayoral polls.
Well, absolutely, Shivangi. It's a major setback to Aam Aadmi Party and, in fact, the Indie Alliance as well. And even the timing is in the middle of the mayor polls when the fight head-on collision with BJP, with Indie Alliance. And, in fact, the mayor polls has been postponed to 23rd due to the High Court hearing. But in the middle of that, more than 200 people have stepped down from the Congress as well as Aam Aadmi Party just because they have joined their hands. They are stitches with each other for the mayor polls and for their strategies as well. And all of a sudden, more than 200 people have joined the BJP party in their office in Chandigarh. We are joined with us BJP President Mr. Malhotra here. Sir, how do you see this big development? And I request you to kindly walk with us so we can show the joinings as well. How do you see this development that more than 200 people have joined BJP? एक नेशनल पार्टी सिर्फ चंडीगढ़ में एक छोटी सी इनके लीडर ईगो रखे नेशनल पार्टी को एक क्षेत्रीय पार्टी को भेज दें तो उससे वर्कर आहत तो होगा ही। तो उस जो आहत है उस वर्कर की तो आज 200 से ज़्यादा लोगों ने कांग्रेस पार्टी के और भारतीय जनता पार्टी के कांग्रेस और आपके उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का थामन संभाला है। ये आपके सामने आपने देखा है। जिस तरह से पिछले दिनों से काफ़ी ये पोचिंग भी चल रही है, बीजेपी ब्लेम कर रही है कांग्रेस को, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी बीजेपी को ब्लेम कर रही है कि वो काउंसलर जो है वो खोसने की कोशिश कर रहे हैं। और जब ये इनका टाई अप होता है तो कुछ कांग्रेस वर्कर्स का हमने सुना कि वो सिर्फ इनके टाई अप की वजह से छोड़ के आए हैं। देखो इनकी नीतियाँ, इनके टाई अप्स, इनका लोगों को धोखा देना, सरकार को धोखा देना, लोगों को पैसे से एडवर्टाइजमेंट के ऊपर लगाना और फिर पंजाब गवर्नमेंट 50,000 करोड़ का लोन लेती है और 10,000 करोड़ एडवर्टाइजमेंट पे लगाती है। तो ये कैसी राजनीति है? और फिर आप जिन लोगों को हमेशा चोर कहते रहे आज कह रहे हो ये हमारे भाई हैं, ये ईमानदार हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए आज 200 से ज़्यादा लोगों ने, वर्कर्स ने, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी का थामा है। और मुझे लगता है आने वाले दिनों में और भी लोग भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करेंगे। और अभी जैसे मेयर की चुनाव हो रही है वो भी पोस्टपोन हो चुकी है, तो आपको लगता है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के जो काउंसलर्स हैं क्या वो भी क्रॉस वोट कर सकते हैं, बीजेपी की नीतियों को वोट कर सकते हैं? देखो ऐसे है, जैसे इन्होंने पंजाब में काउंसलर्स को गन पॉइंट के ऊपर बैठा के रखा हुआ है। अब हरचरण सिंह काला जी हैं, उनकी बेटी का ऑपरेशन हुआ है, उनको आने नहीं दिया, जबकि उनकी बेटी फ़ोन करती रही कि पापा मेरे को देखने नहीं आने दिया। अब ये मिस्टर यादव हैं, उनकी मदर का ऑपरेशन हुआ है, 10 लोग गन पॉइंट के ऊपर उसकी मदर को दिखाने लाते हैं और फिर वापस ले जाते हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? ऐसा तो मैंने दुनिया में देखा नहीं भी अगर बंदा अपनी मदर का हालचाल पूछने आता है वो भी गन पॉइंट पे आता है। इनको कोई सज़ा थोड़ा मिली हुई है तिहाड़ जेल में, तो तिहाड़ जेल तो इन्होंने बना रखा है अपना। Thank you. So in fact you can listen Shivangi that they made it very clear that Aam Aadmi Party and Congress strategy has been completely failed to hold their workers, and that is the reason more than 200 workers have all of a sudden joined BJP party on that date where the head-on collision was happening between BJP and Indie Alliance, and this is the major setback to the Indie Alliance when they are claiming a big victory in Chandigarh mayor polls and blaming BJP for delaying and postponing the elections. Yes. All right, thank you for getting us all the details. A big lead from Chandigarh, 200 leaders, a huge amount of Aam Aadmi Party and Congress leaders have joined the BJP today, that too around the Chandigarh mayoral polls. Amandeep getting his top updates, taking a very short break. Much more coming up as we keep getting you the top updates on India's #1 news channel, Republic TV. Constantly we are told that religion is for the home. Don't be religious outside the home. What is the need to show your religion in the form of temples or collective prayer? Is this truly secularism or is this a confused approach? Every tradition is unique in itself and we must respect that. So hundreds of Muslims are taking part in this celebration. You know, there were Sufi Muslims who came and presented me Tulsi Ramayana.
during the mediation time, they brought Quran also to Sri Ramayana. They knew Chaupai so well in Ayodhya. So what I'm saying is that people have that respect and have their traditions that should be respected and maintained intact. पता है ये लंबी सी मेट्रो लाइन क्यों बनी? सिर्फ इसलिए कि पापा जल्दी घर पर आए और ये दोनों उनकी गोदी में छलांग मार पाए। वो काम ही कैसा काम जिसकी खोज किसी को अपनों से दूर ले जाए। सिर्फ इसलिए रंजीत के शहर में भी एक ऑफिस बना है। कहीं एक नई रोड ने साइंस को शहर से गांव तक पहुंचाया ताकि पूर्णी चांद तक पहुंचने का सपना देख पाए। और हमारे जवानों के कदम कभी न रुकें सिर्फ इसीलिए कहीं एक मजबूत पुल बना है। देश के नंबर 1 सीमेंट अल्ट्राटेक में हम मानते हैं कि इंडिया बनता रहेगा तो आगे बढ़ता रहेगा। अल्ट्राटेक सीमेंट बनेगा तो बढ़ेगा इंडिया। मिलके हम पंजाब को रंगला पंजाब बनाएंगे और बिजली के मामले में पंजाब को सरप्लस बनाएंगे। 24 घंटे बिजली रहिंदी है जी, कोई दिक्कत नहीं बिजली की, सानू कोई प्रॉब्लम नहीं आउंदी जी। जो भी मतलब लोग सरकार नूं टैक्स जमा कराउंदे आ वो टैक्स ही ये लग रहा है जी, ते सानू संतुष्टि है सरकार तो जी। पंजाब सरकार दा भगवंत मान जी दा बहुत बहुत धन्नवाद करते हैं जी। बिजली ਦੇ ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਜਮਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜਮਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੈਪਟਾਪ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਦੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਮਾਂ ਹੀ ਭੋਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਲੱਗਦਾ। ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤਾਂ ਬਣਾਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣੂ, ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਉੱਚਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਜਿਉਣ ਦਾ ਸਤਰ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਉੱਚਾ ਪੱਧਰ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀਜ਼ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਰੱਖਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਯਕੀਨ ਕਦੇ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦਊਂਗਾ। कैंट से पानी होता है 100% प्योर। कैंट आरओ प्योरिटी दिखाता भी है। कैंट देता है सबसे शुद्ध पानी। मोदी सरकार की गारंटी, किसानों को हर साल रुपए 6,000, 11 करोड़ 80 लाख किसानों को अब तक 2,60,000 करोड़ रुपए की सहायता। हमारा संकल्प विकसित भारत। Watching the Thursday edition of This is Exclusive with me, Shavin Said. We're coming to you live from Mumbai. Ladies and gentlemen, tonight on This is Exclusive, we take you through 6 reports coming in from across the country, where we take you through the preparations of that grand celebration that's going to take place on 22nd of January. All the way from Kashmir to Kanyakumari, these reports give you a sense of what's really happening across the country and how exactly this is turning out to be the very moment that India was waiting for. All this and much more on this edition of This is Exclusive. But up first, these are the headlines we are tracking for you at this hour. Ram Lalla's idol installed inside sanctorum today. All eyes on the grand Pran Prashishtha now. Stalin Jr. provokes with mosque demolition remark.
Akhilesh Yadav's leader insults Ram Bhakt, says car sevaks fired upon to protect the constitution. Karnataka Congress unit breaks ranks, says will visit Mandir. Under the lens for Liquorgate, Kejriwal skips the enforcement directed summons again. BJP hits out, asks what's he hiding. Tonight on This is Exclusive, we take you through three first important stories that are coming in from Kashmir, where we take you through what really stands in an ancient temple, and is it only about Ayodhya? What are the preparations that are essentially taking place in temples across the country? In fact, this report comes in from North Kashmir's Baramulla district in Rasai Tank, an ancient temple. This report has been filed by my colleague Arawat, and this is just the beginning. Republic TV has been leading the coverage, getting you reports from across the country, starting all the way from Kashmir down south in Kanyakumari. What exactly is happening? How exactly are the temples also being revamped? Take a look at this special report coming in from North Kashmir. अयोध्या से पहले कश्मीर घाटी में अगर हम देख रहे हैं, लगातार कश्मीर घाटी में जो मंदिर हैं जो कि 1990 से पहले कश्मीर घाटी में बंद हुए थे, हालांकि उनकी एक्टिविटीज़ पाकिस्तान द्वारा कश्मीर घाटी जो टेररिस्ट आए थे उन्होंने बंद करवा दी थी, लेकिन उसके बाद हम देख रहे हैं कश्मीर घाटी में फिर से किस तरह से एक्टिविटी शुरू हो रही है। कश्मीर के अलग अलग जगहों से यहाँ लोग आते हैं, यहाँ पर जो रिचुअल्स होते हैं उनमें यहाँ पर पार्ट लेते हैं। उसके साथ अगर हम इस हिस्ट्री की बात करें, जो ये मंदिर है, हालांकि 1990 से पहले की अगर हम बात करें, इस मंदिर को पाकिस्तान के द्वारा मिलिटेंट ट्रूप को जलाने की कोशिश भी की गई थी, लेकिन उसके बाद यहाँ पे बीएसएफ को डिप्लॉय किया सुरक्षा के लिए। इसके साथ साथ इस पूरी हिस्ट्री को जानने के लिए हम यहाँ के कुछ ऐसे लोगों से बात करेंगे जो काफ़ी टाइम से इस मंदिर के हवाले से जानते हैं, यहाँ वो आते भी हैं। हालांकि दोनों कम्युनिटी की हम बात करें, चाहे मुस्लिम कम्युनिटी की बात करें या हिंदू कम्युनिटी की बात करें, जो कंप्लीट डिटेल हमें बताएंगे कि मंदिर जो है जहाँ पे लॉर्ड राम आते थे और क्या कुछ एक्टिविटी यहाँ होती थी। हालांकि मेरे वीडियो आपको दिखा सकते हैं यहाँ पे किस तरह से अभी भी हम देख सकते हैं, यहाँ पे किस तरह से लिखा हुआ है जय राम के भी यहाँ पे कुछ ऐसे शब्द हैं। अलग अलग जगहों पे हमने कुछ कुंड, यहाँ पे 7 कुंड जो है वहाँ पर जो एक्टिविटीज़ हो रही है वहाँ पर भी इस तरह की राइटिंग्स में लिखा हुआ है। काफ़ी पुराना हिस्टोरिकल मंदिर ये नॉर्थ कश्मीर का है। भगवान राम का ये वो यहाँ पे अपने वनवास के दौर में आए हैं और राम को सुना है कि क्या मान्यता भी है कि उन्होंने वहाँ पे हवन रचाया राम कुंड सीता कुंड में, और उन्हीं के आने के बाद भी वहाँ पे वो मंदिर भी बना हुआ है। कितने कुंड हैं? अगर हम कोस्टल टैंक की बात करें वो उनका बताइए, क्या कुछ इंपॉर्टेंस है उन कुंड? उसमें 7 कुंड हैं, मंदिर उसमें पानी भी होता है। वो राम कुंड, सीता कुंड, भरत कुंड, शत्रुघ्न कुंड, ये 5-6 नामों से, हनुमान कुंड, ये 7 नामों से जाने जाते हैं। और एक कुंड की इतनी मान्यता ये है कि उस वहाँ पे सीता माता खुद ही नहाने का या अपने उनका क्या करना होता था उनका वहाँ पे होता था, और वहाँ पे लोग भी जाते थे। अब 90 के बाद अब बहुत कम जाना है, नहीं तो वहाँ पे हवन भी होता था। ये आषाढ़ मास में हवन भी होता था, लोग जाते थे। बारामूला से ही नहीं, सारे ज़िले के लोग भी वहाँ पे आते थे और हवन में शमूलियत करते थे। अगर हम कश्मीर घाटी की बात करें, अभी कितना क्या इंपॉर्टेंस है जहाँ अयोध्या का हिस्टोरिकल इनॉग्रेशन जो होने जा रहा है? भगवान राम ने को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है, क्योंकि उन्होंने मर्यादा बनाई है। अपने माता पिता ने जो उन्होंने उनको हुक्म किया, वो हुक्म की मान्यता की। उसके बाद उसने जाने के वक्त अपने छोटे भाई को राजपाट त्याग दिया, इसलिए ये इसकी मान्यता ही मान्यता है। इसीलिए तो इस वक्त जो वहाँ पे मंदिर बन रहा है, ये तो बहुत खुशी की बात है, हमारे लिए गर्व की बात है कि वहाँ पे ये 500 साल के बाद मंदिर बनाया जा रहा है।
जहां अयोध्या का हिस्टोरिकल सेलिब्रेशन होने जा रहा है, वहीं अगर कश्मीर घाटी के मुस्लिम कम्युनिटी की बात करें, वो भी काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। जो बारामूला में स्थापित यहाँ पे शिल्पुत्री मंदिर है या उसके साथ और भी राम टेम्पल कहीं कश्मीर घाटी में है, उन पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है परवेज सलाम। आप मुझे बताइए, बारामूला की गौसल टेम्पल की हमें हिस्ट्री बताइए, क्या कुछ रहा है? देखिए रावत जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझसे ये बात पूछी। अगर बारामूला की हिस्ट्री के बारे में अगर आप जानेंगे तो आप देखेंगे कि बारामूला का असली नाम बारामूला नहीं, विहारमूला है, जिसका मतलब ये है कि यहाँ पे हर मज़हब से से जुड़ा हुआ शख्स यहाँ पे आते थे और इंसानियत की बहबूदी के लिए वो काम करते थे। जहाँ तक आपका सवाल है गोसन टेंग मंदिर का, ये मंदिर है, मेरे फोर फादर जो हैं वो इसके केयर टेकर रहे हैं। मैंने अपने दादाजी के साथ वहाँ पे गया हूँ। तो ऐसा माना जाता है कि जब श्री राम जी को वनवास के लिए भेजा गया, उनके साथ माता सीता भी थी और लक्ष्मण जी भी थे, तो वो यहाँ पे आए हैं गोसन टेंग में, जिसका ये मतलब है, कश्मीरी में हम इसे गोसन टेंग कहते हैं, और अगर उर्दू में मैं इसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करूँ तो इसका माने ये होगा ऋषियों और मुनियों का स्थान, जो कि बहुत एक ऊंचाई पर मौजूद है, वाक़या है। और जैसा सुनने में आया है, तारीखदान से मैं सुन चुका हूँ या अपने फोर फादर्स में सुन चुका हूँ कि एक ऐसी जगह है जहाँ पे मन को बिल्कुल शांति मिलती है और पूरे बारामूला का नज़ारा होता है। तो खुसूसन मैं यही दुआ करूँगा कि जैसे पहले माहौल था, वहाँ पे बड़े दिन होते थे जिनको हम शीशनेर बड़दोह के नाम से जाने जाते हैं। हमारे ऋषि और मुनि वहाँ पे आया जाया करते थे, बहुत सारे लोग कश्मीरी वहाँ पे अपना रोज़गार चलाया करते थे, लेकिन अफसोस हालात की वजह से वो धीरे धीरे कम होता गया। मेरी नौजवानों से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि सबसे पहले आप अपनी तारीख के अवराक को देखें, हमारे साथ क्या क्या हुआ है, हमें किस बुनियाद पर एक दूसरे से लड़ाया गया है, उसको ख़त्म करें, और जो हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टीचिंग्स है उस पे अगर हम चले तो मेरे ख्याल से ये हिंदू मुस्लिम फसाद जो है ये बिल्कुल नहीं रहेगा। हमारा देश जो है ये बिल्कुल पुरअमन रहेगा, शांति से सभी रहेंगे, सभी लोग अपने मज़हब की पासदारी करेंगे। विद विजय फिरदौस, इरावत महराज, बारामूला, कश्मीर। After Kashmir, let's now take you to Jammu, where my colleague Gursubran travelled to the outskirts of Jammu to meet a special car sevak. Sanjay Kumar happens to be one of the youngest car sevak who participated in the second car seva back in the year 1992. In this report, he basically narrates about how he braved all odds to participate in the car seva and how has the journey been like. Remember, it's been an arduous journey for several car sevaks who've been participating in what many consider a celebration of India's ancient civilization. जी, मुझे ये बताइए 1990 पहली कार सेवा क्या हुआ था, क्योंकि बहुत बड़ा इतिहास है इस मंदिर का। जब जय श्री राम जी, जब 1990 में कार सेवा का काम शुरू हुआ तो हर ज़िले में, हर गांव में एक संदेश गया कि चलो वहाँ राम जी का कार्य के लिए चलना है। तो जब यहाँ से गए, देश दुनिया से हर जगह से लोग गए, तो हमारे महाराज जी उस टाइम अपनी जोश और जवानी में थे। ये भी विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए हैं। ये यहाँ से गए, इनके साथ में 2 शिष्य गए। जब दोनों शिष्य वहाँ गए तो जब ये लेट पहुँचे तो बताते कि वहाँ हमको रोक दिया गया। तो कुछ ऐसे थे जो तैराक थे कि उन्होंने सरयू में रस्सा बांधा और सरयू रस्से के सहारे रातों रात अंदर गए। बहुत से कार सेवक है जो रातों रात रस्से के बल से अंदर गए। कुछ कार सेवक ऐसे हुए कि नहीं पकड़ पाए और सरयू में भी बह गए, वो वहीं अपना शरीर को उन्होंने निछावर कर दिया। जब ये सुबह पहुँचे तो वहाँ एकदम बस एक ही नारा लगा के चलो जय श्री राम, और बाबरी ढांचा को गिराना है। और काफ़ी नेता थे, बड़े जोशीले भाषण दे रहे थे। जब ये बताते हैं कि गुरुजी और शिष्य दोनों वहाँ आगे बढ़े तो मुलायम सिंह की सरकार थी, उसने आदेश दे दिया कि कोई भी कार सेवक और मस्जिद के पास, बाबरी मस्जिद के पास नहीं जाने पाए। जब वहाँ कुछ कार सेवक कुठारी, वो बताते कुठारी बंधु तो ऊपर चढ़ गए थे, उनको ऊपर से ही गोली मारी गई थी। इनके जो शिष्य थे, ये गुरुजी पीछे जा रहे थे, शिष्य आगे जा रहे थे। इनको पास ही आया और आर्मी वालों, पहले पुलिस वालों ने रोका कि भाई ये आगे बढ़ने से पीछे हो जाओ, उन्हें गोली मारी जाएगी। लेकिन इनके अंदर एक ऐसा जुनून था कि ये पीछे मुड़ने का नाम नहीं ले रहे थे। वो बताते हैं, महाराज जी बताते हैं कि एक गोली मारी, एक शिष्य को गोली मारी। उसको जैसे गोली लगी तो उसने उठाया, उसने देखा ये तो शरीर छोड़ चुका है। उसने जय श्री राम का नारा लगाया, वो भी आगे बढ़ गया तो उसको भी गोली मारी गई। उसको गोली मारी तो उसने आवाज़ लगाई, महाराज जी मुझे तो गोली लग गई है। बोले कोई बात नहीं है, गोली लग गई है तो क्या हो गया है, राम के कार्य में तो जा रहा है, आया इसीलिए था।
महाराज जी भी उठे और महाराज जी ने जल्द उन्होंने महाराज जी को भी गोली मारी। तो महाराज जी को गोली मारी लेकिन इनके पैरों में गोली लगी, ये भी गिर गए। तो उनको उठा करके बताते सरजियों में बहा, जो भी जितने कार से वो गोली चल रही थी उठा करके सरजियों में फेंकते जा रहे थे। महाराज जी को उठा करके जब लाए तो इनको होश आया, तो इनको गाड़ी में रखा और जेल में डाल दिया। जब ये जेल में गए तो कई दिन के बाद निकले, वहाँ से निकले उन्होंने एक ही प्रण लिया कि मैंने अपने 2 शिष्य यहाँ शहीद, मेरे 2 शिष्य शहीद हुए हैं, मैं राम जी के पास आऊँगा, आस्था वही है, लेकिन जब राम जी मंदिर में स्थापित होंगे तब मैं यहाँ दर्शन करने आऊँगा, नहीं मैं दोबारा आऊँगा नहीं। वहाँ से चरणोपात कर लिए उन्होंने, उठा करके लाए, इनकी पूजा सेवा। शिष्य जो है वो नहीं आए, लेकिन ये चरण पादुका वहाँ से चरणोपात का ले आए, बस चरणोपात का लाए, बोले कि मैं इनकी ही पूजा करूँगा और जब मंदिर में राम जी विराजमान हो जाएंगे तब मैं जाकर के राम जी के दर्शन करने जाऊंगा वहाँ। आज भी इस चरण पादुका की पूजा यहाँ पर रोज होती है? बिल्कुल, आज भी इनकी पूजा सेवा होती है, सुबह शाम उनको ही, शहीदों को इनके। आप तो बड़ी खुशी हुई है कि अब उनके जो सच्ची श्रद्धांजलि मोदी ने ही दी है कि जहाँ उन्होंने शहादत किया है जिस काम के लिए, आज वो काम पूर्ण होने जा रहा है। 22 तारीख को हमारे राम जी और मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। 33 साल से यहाँ के महाराज जो हैं वो राम मंदिर नहीं गए 33 साल से। हाँ, जब से वो हुआ ना तब के बाद गए। हमको ही 20-22 साल हो गए, अयोध्या जाते हैं, हर साल जाते हैं और विवाह पंचमी मनाते हैं। हम महाराज जी को बोलते लेकिन महाराज जी बोले जब तक मंदिर नहीं बनेगा तब तक मैं नहीं जाऊंगा। बाकी कहीं भी चलेंगे, राम हनुमानगढ़ी जाएंगे, दशरथ महल जाएंगे, लेकिन उस जन्मभूमि में वो नहीं जाते हैं। बोले कि मैंने सामने देखा है, मेरे शिष्यों को गोली मारी है। अगर बोले मैं चला जाता मुझे अफसोस नहीं था, लेकिन मेरे सामने मेरे शिष्यों को उन्होंने गोली मारी है और मेरे सामने शहीद हुए और मैंने उनको मुखाग्नि भी नहीं दे पाई क्योंकि उन्होंने उठा करके सीधा सरजू में फेंक दिया। बड़ा चिल्लाए लेकिन बोले वहाँ सुनने वाला कोई। Let's now take you through a special report coming in from Wayanad in Kerala. We tell you the story of Tirunelli Temple, and not just that, a painting of Lord Hanuman on a rock. What's this all about? Take a look at this special report filed by my colleague Ashwin. Searching for many days, in fact, finally we have arrived at the bank of Kalindi River, a river which is flowing very close to the famous Tirunelli temple, known to be as the southern Gaya, and lakhs of people offer Pitra Tarpana, which is Pitra Moksham, also is called as oblation to the mains on this very riverside. So it's very important. And while we have been hearing about a particular inscription and the picture of Hanuman, we have finally found it. And this is that not many people know about this particular drawing which is done on this rock. Now, if you look at this particular rock, it definitely looks ancient because you can see as if there's a lava flow that has come through it. You can see the structure of this rock, and there is certainly very ancient, probably the lava burst that happened before the formation of Deccan Plateau itself could be an indication of this. But what is mesmerizing is this particular drawing which is over here. It shows Hanuman, and next to that you also see in a square a print of footprint, and underneath written a text, and it's written in Kannada, and it's called as Beharucha. Now this Beharucha is in fact a very Vedic word. It, in fact, the Malayalam translation, what we found from one of our expert who had also joined us, he said there is a process of learning a particular way of doing tarpana and many other rituals related to Hinduism. So that particular word, broad definition, is what is called as Tagariyam in Malayalam, and Pagariyam in Malayalam, and the translation of that is Beharucha. So here we see Lord Hanuman on a rock. You can see the entire rock, feet of Sri Rama, and Beharucha, a Vedic word written. It is absolutely mesmerizing. You know, Jan 22nd, Ayodhya Pran Prashishtha is going to take place.
And in Wayanad district, we are very close to the borders of Karnataka. The Nagara-style is very close. The Nagara-style Tiger Reserve is so close by. And just on the border, we can see a beautiful, beautiful drawing on the rock. And this certainly feels extremely satisfying to find it. So he is somebody who, Sukumaran is somebody who helped us find this place. After much research, we finally found this place. So you knew about this place before. How sacred is this place? You have told us that many saints have meditated over here. Is it true? Like, can you? It's a very old place, and here we are also doing meditation here. It's very close to forest and nearby Kudirakod temple. Okay. On this way, Rama and Lavakusha, Sita also may be passed here, passing way, their way. So certainly look at this beautiful river. I just want our video journalists to pan across and show. This river itself is called as Kalindi River. So it is a connection with Lord Sri Krishna. Is it right? Maybe, because the name Kalindi on the Krishna Yuga. That is why we are called Kalindi. And also, Krishna means black. And the river, you show the river is all blacky shade. Correct. That is why Krishna. So Kalindi. Beautiful, beautiful. I cannot express anything more. What we see here is a piece of history probably linked hundreds and thousands of years ago. Somebody has done this, and it's all connected. He says there are many sages who have meditated over here. They have found several evidences for that. The Kalindi River is flowing. Sri Rama's holy feet is drawn over here. Hanuman is there. What more can one ask for on ahead of the Pran Prashishtha in Ayodhya, when today we can find such a beautiful finding in Wayanad, which is so far away, and the stories of Ramayana we can definitely now say it has gone far and wide, and these inscriptions will always remain etched in stone, and so does the memory of Rama and Ramayana will remain forever and eternal. Many forests area and through the waters of Kalindi, we have finally found the inscription of in Kannada with the feet of Lord Rama, as well as a drawing of Hanuman next to it. A drawing that is probably very ancient, which has gone hundreds and thousands of years ago. There are many such spots that are yet to be revealed to the world to know the glory of Lord Rama and of that of Ramayana, and this is just one among them. With video journalist Mani S. from Wayanad, Ashwin Nandakumar, Republic TV. Let's now take you through a special story coming in from Karnataka-Kerala border. Ladies and gentlemen, much has been spoken about how our temples have been destroyed. There are living examples of how various shrines across the country have been destroyed, and one such example is from this shrine en route to Tirunelveli temple. Now, right in the middle of the forest is a remaining part which is completely in ruins. It is said that this was destroyed by the army of Tipu Sultan. Take a look at this special report filed by my colleague Ashwin, which gives you a sense of what entailed in the past, and more importantly, how temples have been destroyed by the Mughals in the past. We are at the Kerala-Karnataka border, and this place is en route to Tirunelveli temple. And here, when you go a few meters away from the road towards inside the forest, you can find
two shrines. Two of these shrines are similar looking. One of the shrine, which is this one, is facing east, whereas the other shrine, which is adjacent to it, is facing north. Now, these two shrines are that of Lava and Kusha, the two identical twins of Lord Rama and Devi Sita. Now, currently, this shrine comes under a Gauda family, who are based nearby, and the architecture also, if you see, it has got a very distinct Karnataka-style architecture as well. Although this temple, the shrine, which is right now in a dismantled position, it has definitely worn out. It is somewhere in the middle of the forest. The shrine continues to thrive over here. Now, this place is called as Kalishwari Temple, and there you can find two identical shrines, and inside we can find two installations which are very identical. And also, what is important to note is that this place, ancient name was called as Kudira Kod. Kudira means horse. So the legend says that when the Ashwamedha Yaga happened, Lava and Kusha has actually stopped the horse at a location, and the people over here believe that this is a location where the horse was taken in control by Rama's two sons. And later what followed was how Lakshmana, how all the others came in, and then the story of Ramayana follows. So a very interesting place, a temple managed by a Gauda family in Kerala border is something that is fascinating, and that of Lava and Kusha, yet another shrine in the middle of the jungle. There are people who said that elephants roam around in this area, and it is very frequent visitors in these shrines. As you can clearly see, there's nothing much remaining. There is not a proper structure. However, this temple, the shrine has survived the time, I must say. We have also been told that during the time of Tipu Sultan, there was an attack in this temple, and most of this temple's property and resources were also destroyed. However, standing tall is still the remnants of the grand glory of Rama and Ramayana. Right now we are at Kalishwari Temple, which is deep inside the forest near Tirunelli in Wayanad district. Now this place is very close to the Karnataka border of Nagarhole as well. Now, if you see the architecture of this place, it has a distinct Karnataka flavor to it. And there are two shrines, identical shrines. One is facing north and the other is facing east. The ancient name of this place is called as Kudira Kod, which Kudira means horse. So it is believed that Lava and Kusha, whose shrines are what you're seeing right now, had tamed the Ashwamedha horse in this very spot. Today this temple is managed by a Gauda family who lives in Kerala side. So it's a distinct Karnataka style architecture which is there. But this temple certainly seems to have been attacked. There are information that it was also attacked by the Tipu Sultan's invading army as well. But the important part is the legend of Ramayana still lives on so many kilometers away from Ayodhya, and the legend that Lava and Kusha lived in the forests of Wayanad still remains, because these are some of the grand icons that reminds of the history of the place. Long years back, Rama held a Ashwamedha Yagam, and the Ashwam comes here and caught the Ashwam from by Lava and Kusha. That is the importance of Kudira Kod, which the name called as Kudira Kod, horse place, horse held place. That is why we are calling Kudira Kod. Now the time the temple is not working as a temple. There is no chance to renovate because the forest department strictly denies the area. So and also there is not a huge population
There is no humans there or colony or otherwise, other thing. Only once in a year they held a puja for Kali Shri. That is the Gauda team, they were calling only the Kali Shri. We hope you enjoyed watching these reports coming in from different parts of the country. We promise to get you more such reports in the coming few days. That's all that we could pack in this edition of This Is Exclusive. On the other side, news and updates continue. पता है ये लंबी सी मेट्रो लाइन क्यों बनी? सिर्फ इसलिए कि पापा जल्दी घर पर आए और ये दोनों उनकी गोदी में छलांग मार पाए। कहीं एक नई रोड ने साइंस को शहर से गांव तक पहुंचाया ताकि पूर्णी चांद तक पहुंचने का सपना देख पाए। और हमारे जवानों के कदम कभी न रुके, सिर्फ इसीलिए कहीं एक मजबूत पुल बना है। देश के नंबर 1 सीमेंट अल्ट्राटेक में हम मानते हैं कि इंडिया बनता रहेगा तो आगे बढ़ता रहेगा। अल्ट्राटेक सीमेंट बनेगा तो बढ़ेगा इंडिया। Amity faculty have filed over 2100 patents. Yet another reason why Amity has been ranked among the top for innovation achievements. सालों से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते आ रहे हैं परीक्षा पे चर्चा, और फिर एक बार स्टूडेंट्स, टीचर्स और पेरेंट्स होंगे एक साथ, दूर करने एग्जाम्स की टेंशन और चुनने सही डेस्टिनेशन। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ आ गया है परीक्षा पे चर्चा 2024। चलो तनाव पर काबू पाते हैं, जीवन को उत्सव के रूप में मनाते हैं, परीक्षा पे चर्चा में आते हैं। अपनी क्षमता, अपनी प्रायोरिटी, अपनी आवश्यकता, अपने इरादे, थोड़ा हर अपेक्षाओं को उसके साथ जोड़िए। परीक्षा पे चर्चा 2024 29 जनवरी सुबह 11 बजे। PC Chandra Jewelers presents Diamond Utsav. Get 10% discount on diamond value. ₹100 off on every gram of 18 karat gold jewelry. A short gift on purchase of every diamond jewelry. Offer valid till 4th February 2024. Exchange free jewelry insurance and EMI available. Conditions apply. PC Chandra Jewelers, a jewel of jewels. भाई इतनी बड़ी टाइल, इतनी बड़ी बड़ी हिट्स आप लोगों ने मुझे दी हैं। टाइल्स तो बड़े होने चाहिए। सुमानी मैक्स टाइल्स, टाइलों का सबसे बड़ा भाई। सुमानी मैक्स टाइल्स, जमीन से जुड़े। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, विश्व की सबसे विशाल खाद्य सुरक्षा योजना। वर्ष 2020 से देश के 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। मोदी सरकार की गारंटी, कोई गरीब अब भूखा नहीं रहेगा। अब अगले 5 वर्षों यानी 2028 तक देश की किसी भी राशन की दुकान से हर लाभार्थी को मिलेगा मुफ्त राशन। मुसीबतों की छुट्टी, मोदी की गारंटी। Just another tycoon, hustling way too early in the morning, passing on this happy tune, helping babies feel at ease. Oh, all kinds of babies. No drive is just another drive when you're in a tycoon. Volkswagen. जहाँ यादगार होता है हर एक किस्सा। इको रिट्रीट ओडिशा। भाई इतनी बड़ी टाइल, इतनी बड़ी बड़ी हिट्स आप लोगों ने मुझे दी हैं। टाइल्स तो बड़े होने चाहिए। सुमानी मैक्स टाइल्स, टाइलों का सबसे बड़ा भाई। सुमानी मैक्स टाइल्स, जमीन से जुड़े। देख इत्तू सी है, थाली तो अनलिमिटेड होनी चाहिए। कैंटीन की थाली है, कोई नीवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी थोड़ी है। मतलब इत्तू भी क्लेम किया तो पूरा बेस कवरेज वापस।
अनलिमिटेड टाइम। ये तो मुझे भी चाहिए। जिंदगी को क्लेम कर ले। मोदी सरकार की गारंटी, सबका अपने पक्के घर का सपना होगा पूरा। 4 करोड़ पक्के घरों का निर्माण, हमारा संकल्प विकसित भारत। Ram Lalla's idol installed inside sanctum sanctorum today. All eyes on the grand Pran Prashishtha now. But India goes all out to mar India's big moment. Stalin Jr. provokes with mosque demolition remark. Akhilesh Yadav's leader insults Ram Bhakt, says car sevaks fired upon to protect constitution. Congress leader fearmongers with Kaliyug remark. Karnataka unit breaks ranks, says will visit Mandir. लेकिन ये नोटिस एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत भेजे जा रहे हैं। कोई नहीं, ये जांच 2 साल से चल रही है। 2 साल में इनको कुछ नहीं मिला। Under lens for liquor gate, Kejriwal skips ED summons again. BJP hits out, asks, what's he hiding? Good evening and welcome, friends. With 4 days to go for the mega Ram Mandir Pran Prashishtha in Ayodhya Ram, the city is all decked up. India is awaiting the big moment with such anticipation. But the opposition, on the other hand, is going all out to vitiate the big moment. AIMIM chief Asaduddin Owaisi has now hit out at the BJP, saying Eid holiday was cancelled by the party. Akhilesh's party has now insulted Ram Bhakt again, while Sonia's Congress has now provoked with Kaliyug remark. Stalin Jr. has now raised the mosque demolition. And the big question remains, why is India going all out to berate Ram Bhakts? Even as the politics continue to rage on. With the largest team of reporters, Republic is leading the coverage as the nation gears up for the biggest moment in India's civilizational history. While we will come back with those Congress and other opposition party comments with the debate later in the evening, for now, we go to the ground to Ayodhya Ram, where Priyanka is reporting live with a lot of ground reports and some live action. Over to Priyanka in Ayodhya. The entire nation is awaiting the 22nd of January, a very special moment. In fact, we're trying to capture with our cameras from where we are standing right now. In Ayodhya, in fact, this is the beginning of the Chappan Bhog that will be made for the 22nd of January, after which it will, in fact, as a prasad, will also be distributed in the rest of the country. Let's take our viewers through as to what exactly is going to be made here, because you can see that the puja, in fact, of these particular vessels had also just been carried out. You can see buckets full of ghee that is kept here, and along with that flour as well, there are laddus being made as we speak. That is the first part that is going to be made. The cooks, the halwai as we call it, are in fact hard at work. We will try to speak to some of the officials here to help us understand better as to how exactly all of this prasad is also going to be made and how it is going to be distributed in the rest of the country as well. So because as of now we are looking at laddus. Sir, हम देख रहे हैं कि बनाए जा रहे हैं, हलवाई लोग सब काम कर रहे हैं, पूजा अर्चना हो चुकी है, ये जो उनके बर्तन है उनकी पूजा भी हो चुकी है. थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों के लिए क्या कुछ बनने वाला है छप्पन भोग में, क्या कुछ प्रसाद की तरह बने. देखिए, अभी यहाँ पर हमारे ये जो भोग स्टार्ट हो रहा है बनना, उसमें यहाँ पर बूंदी प्रसाद बन रहा है. ये पूरे देश में वितरित होगा और इसकी 3 से 4 हफ्ते की लाइफ होगी, जिससे पूरे देश में आसानी से चला जाए और सभी राम भक्तों को मिल जाए. इसमें हम प्रयास कर रहे हैं कि अलग अलग हमारे जो स्थान है वहाँ पर 56 भोग बन रहे हैं, और उसमें क्या है कि सभी लोग अपने प्राण से लगे हुए हैं भव्यता और दिव्यता के साथ.
प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में, तो जो सारे भोग बन रहे हैं वो भी बहुत दिव्य और भव्य बन रहे हैं, जिससे कि वो सभी की फीलिंग्स उसमें ऐड हो सकें और पूरे देश में जो राम भक्त हैं, राम को मानने वाले हैं, सीताराम सरकार के फॉलोअर हैं, उसमें वो सब अच्छा रहे। इसके लिए अभी श्री राम जी की ननिहाल जो दंड कारण में है, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और उड़ीसा का जो क्षेत्र है, वहाँ से भी कुछ सामान आया है। और जनकपुर और सीतामढ़ी, जो माँ सीता का, माँ भूमिजा जिनको हम कहते हैं, धरती पुत्री, उनके मायके से भी कुछ सामान आया है। कहीं से मेवा आ रही है, कहीं से घी आ रहा है, कहीं से कुछ आ रहा है। तो ऐसे करके संपूर्ण भारत का प्रतिनिधित्व यहाँ हो रहा है और विश्व के अनेक देशों से भी लोगों ने अपना सहयोग किया है। उन सब जो कुछ लोगों ने अपनी भावनाओं से जो अयोध्या में लेकर आए थे, उसका भी अब इसमें उपयोग हो रहा है। जो 56 भोग बनाया जाएगा और ये 22 जनवरी को लोगों को दिया जाएगा और उसके बाद भी भेजा जाएगा, उसमें क्या कुछ बनेगा? और ऐसा है, जो भी कुछ बन रहा है वो सब प्रभु की इच्छा और कृपा से है। उसमें हम लोग तो एक माध्यम है और वो जो प्रभु चाहेंगे वो सारी चीज़ें बनेंगी। अभी क्या है, क्या क्या बन रहा है, ये राम जी की कृपा है। वो जो जब वितरित होगा तो सारा देश देखेगा कि क्या क्या चीज़ें बनी है और क्या भोग प्रभु को अर्पित हुआ और क्या वितरित हुआ। इस वक्त यहाँ पे खाली अभी लड्डू बनाए जा रहे हैं? जी, यहाँ ये भोग बन रहा है और बाकी जगह पर और भी चीज़ें हैं। So you can see, Shivangi, you know how essentially the preparation is going on, because this is the first beginning of, in fact, the prasad that is going to be given to the devotees from 22nd of January, after which will be distributed in the rest of the country. That has now begun, and in fact there was a puja that was carried out of all of the vessels, and now the cooks and the halwai in fact are hard at work. They're making the prasad that will be distributed not just to the devotees who will be able to be in Ayodhya on 22nd, but also in the rest of the country. All right, that was a ground report by Priyanka, but in fact she's joining us live from Ayodhya Dham, and let's go straight to her. Priyanka, favorite festive spirit building up. Where you are, please tell us what's really happening around you. I can see some activity in your backdrop, and please give us a lowdown of what's going to happen over the next 24 hours. Abhishek, we are reporting from the Lata Mangeshkar Chowk, and I'd like to pan our cameras and show our viewers a complete 360 view of what's really happening here, because it feels like a celebration. It feels like a festival over here, as we are looking at people from across across the country who are pouring in. Now, a very interesting thing that's happening right beside me, in fact, because we are looking at these several stories of people who have come to Ayodhya from across the country. One such person, in fact, is also joining us, who has cycled his way from Delhi to Ayodhya, and he is in fact doing an aarti. Let's show you the visuals of his entire cycle first. That helps us understand how essentially he has made that journey. This, of course, are the posters of Lord Ram and Mata Sita, and of course we also have some political posters here of the Prime Minister Narendra Modi, of JP Nadda, and interestingly he is doing an aarti of this entire vehicle right now. And that essentially is something that's happening everywhere, in every other corner of this entire city that we are looking at. Several such stories, Abhishek, of people pouring in, and this essentially shows the kind of faith that people have, because of which they are doing these kind of things. They have crossed the journey over thousands of kilometers, and they are in fact coming to Ayodhya. आप बताइए, ये क्या आपका वाहन आप लेकर आए हैं, किस तरह से साइकिल चलाकर आए हैं, कहाँ से आए हैं, और ये सारा जो आपने लगाए हैं पोस्टर्स, डेकोरेशन, पूरा हमारे दर्शकों को बताइए। मेरा नाम हुआ रतन रंजन और दिल्ली से अयोध्या साइकिल चलाते आया हूँ प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए। और ये साइकिल यात्रा कार सेवकों के सम्मान में है, जो हमारे कार सेवक, देवतुल्य कार सेवक, पूजनीय कार सेवक, जिन्होंने अपना जो है कि बलिदान दिया, जिन्होंने जान गंवाई राम मंदिर के संघर्ष में, जो जेल गए, आज मैं उनके सम्मान में जो है कि उनका आरती उतार रहा हूँ। ये देखिए कोठारी बंधु। अच्छा, ये सारे कार सेवक की फोटोज आए, तो आज उनके सम्मान में उनका आरती उतार रहा हूं। और कार सेवकों में सबसे अहम भूमिका मोदी जी की रही है। देखिए सबसे आगे मोदी जी जो है कार सेवकों का मनोबल बढ़ाते हुए
आगे चलते थे। तो मोदी जी का जो योगदान है वो राम मंदिर में भी सराहनीय है और भारत की मजबूती के लिए और भारत के नवनिर्माण में भी मोदी जी का योगदान सराहनीय है। तो आज हम मोदी जी का भी आरती उतार रहे हैं कि आज कलयुग में प्रभु श्री राम मोदी जी के रूप में जो है कि इस धरती पे है, क्योंकि मोदी जी के विचार और प्रभु श्री राम के विचार जो है देश हित में और हमेशा इन्होंने प्रजा के भलाई के लिए काम किया है। तो हम तमाम देशवासी खुशी से ये भी दूसरा मैं देख रही हूँ कटआउट है, ये किस चीज का है? ये देखिए उस समय की अयोध्या कह रही थी चीख चीख के कि मैं अयोध्या हूँ, मैं अयोध्या हूँ। आज की जो अयोध्या की स्थिति है ऐसा लग रहा है कि अयोध्या स्वर्ग है, स्वर्ग से भी सुंदर आज अयोध्या सजा हुआ है। तो ये कार सेवकों का जो है कि पूरा संघर्ष, हमारा जो विरासत सनातन का जो है मान सम्मान, प्रभु श्री राम का जो है कि राम मंदिर भव्य बन के तैयार हो गया है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होगा। So, you know, Abhishek, to pan our cameras, I'll ask Vijay Vipin to show you, because we just showed you the pictures of the historic moments, and now we'll show you the present moment of Ayodhya right now, right here at the Lata Mangeshkar Chowk. That helps us understand how far essentially the people of Ayodhya have come, how far essentially the city of Ayodhya has come. We'll keep moving towards more and more such people, in fact, who've gathered here. You know, they have stories to tell as to where they have come from, thousands of kilometers of journey that they have also made to come to Ayodhya during the consecration ceremony. Maybe they would not be able to be here on 22nd of January, but they are trying to come in as early as possible and to be in Ayodhya as much as possible. We have another gentleman joining us here. He has an entire tempo and he's you know, also trying to show it to us. आप बताइए क्या आप यहाँ पर लेकर आए हैं, क्या पदयात्रा की है, किस तरह से पूरा सजावट करके यहाँ पे लेकर आए? सर्वप्रथम मैं अयोध्या वासियों को मेरा जय जय श्री राम। मैं विश्व हिंदू जनसत्ता बहुमत पार्टी का अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्तिक गेंदलाल जी डोके। राव पिल्ले विश्व हिंदू जनसत्ता बहुमत पार्टी का अंतर्राष्ट्रीय महासचिव। अच्छा, और ये क्या आप यहाँ पर लेकर आए हैं, पूरा डेकोरेशन करके लेकर आए हैं? आगे बताते हैं, इधर आइए। ये है हमारा नागपुर से अयोध्या पैदल यात्रा विश्व हिंदू जनसत्ता बहुमत पार्टी की ओर से। हम लोगों ने 2011 में 2 मार्च 2011 में शिवरात्रि के दिन नागपुर से राम जन्मभूमि अयोध्या तक पैदल यात्रा किया था। उस समय हमारा मुख्य उद्देश्य था जो 550 सालों से जो राम जन्मभूमि अयोध्या का मुद्दे पे जो राजनीति जो चल रही। Absolutely, the Rajniti is another point. You know, Abhishek, we will keep coming back to these stories as more and more people pouring into Ayodhya from across the country, and each of them have a very interesting story to share with us. And of course, we will share all of those with our viewers. Right now, slipping into a very short break. Don't go anywhere. कहाँ हो तुम किम? कैसी लगी हमारी एंट्री? अल्टीमेट। स्विच। कुर्सी की पेटी बंदी है ना, मौसम बिगड़ने वाला है। और अब क्लाइमैक्स। The new Hyundai Creta. Undisputed. Ultimate. आपने सोमानी का नया रोल देखा? वही स्टाइल और रेंज सोमानी बाथवेयर में भी। सोमानी बाथवेयर। मोदी सरकार की गारंटी, सस्ती दवाई, अच्छी दवाई, कम से कम 75% डिस्काउंट। अब तक जरूरतमंदों के 23,000 करोड़ रुपए बचे। हमारा संकल्प विकसित भारत। बनाऊंगा मैं तो बनेगा भारत। बादलों पे चल के हवाओं से मिलके मैं बनाऊंगा। उम्मीदों के पंख कंधों पे लगा के मैं बनाऊंगा मैं तो बनेगा भारत। बनाऊंगी मैं तो बनेगा। स्किल, स्टील और दिल से बन रहा है भारत। AMNS India. Smarter steels, brighter futures. Whenever I had ice cream or cold water,
I would experience a sharp shooting sensation. So I just kept ignoring it. Even my hot chai was giving me the same amount of discomfort. My dentist recommended Sensodyne. So now I can be completely carefree and sip my hot cup of tea. It really works. भाई इतनी बड़ी टाइल, इतनी बड़ी बड़ी हिट्स आप लोगों ने मुझे दी हैं। टाइल्स बड़े होने चाहिए। सुमानी मैक्स टाइल्स, टाइलों का सबसे बड़ा भाई। सुमानी मैक्स टाइल्स, जमीन से जुड़े। मिलके हम पंजाब को रंगला पंजाब बनाएंगे और बिजली के मामले में पंजाब को सरप्लस बनाएंगे। 24 घंटे बिजली रहिंदी है जी, कोई दिक्कत नहीं बिजली की, सानू कोई प्रॉब्लम नहीं आउंदी जी। जो भी मतलब लोग सरकार नूं टैक्स जमा कराउंदे आ, वो टैक्स ही ये लग रहा जी, ते सानू संतुष्टि है सरकार तो जी। पंजाब सरकार दा, भगवंत मान जी दा बहुत बहुत धन्नवाद करते हैं जी। बिजली दे बिल तो जमा ही मैनू 1.5 साल हो गया, जमा जीरो आ रहा मेरा। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੈਪਟਾਪ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਦੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਮਾਂ ਹੀ ਭੋਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਲੱਗਦਾ। ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤਾਂ ਬਣਾਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣੂ, ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਉੱਚਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਜਿਉਣ ਦਾ ਸਤਰ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਉੱਚਾ ਪੱਧਰ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀਜ਼ ਨੇ। मेरे ते यकीन तुसी कीता तो यकीन रखियो, मैं तुहाडा यकीन कदे टुटण नहीं दूंगा। All right, we are moving out a bit from Ayodhya for a breaking news development still connected with the opposition politics, and that's Samajwadi Party and the Congress. The fighting continues, or infighting continues, over seat-sharing talks. The SP leader, Ram Yadav, has said that the party will contest on 80 seats with Congress. Now the catch is, how many seats does the Congress get? Because sources told reporters yesterday that Congress wants to contest on 80 seats and the Samajwadi Party thinks that's little ambitious. We'll try and connect with a reporter on the ground for this breaking news development, which means jousting for number of seats continues in the indie space. And let's see if we are getting a report. Okay, let's listen to first what Ram Yadav has said, and then we come back for a reporter live. अब मंजिल दूर नहीं। कितनी सीटें सर कितनी का दोनों मिलके 80 पे लड़ेंगे। कब तक फैसला होगा कितनी दिन किसी क्षण कभी दूर नहीं है, बहुत जल्दी हो जाएगा। लेकिन सपा कितने पे लड़ेगी? दोनों मिलके 80 सीटों पर लड़ेंगे। अब मंजिल दूर नहीं। कितनी सीटें सर कितनी का दोनों मिलके 80 पे लड़ेंगे। कब तक फैसला होगा कितनी दिन किसी क्षण कभी दूर नहीं है, बहुत जल्दी हो जाएगा। लेकिन सपा कितने पे लड़ेगी? दोनों मिलके 80 सीटों पर लड़ेंगे। Well, viewers, we are bringing you each and every voice and each and every story of people who are pouring into Ayodhya. We are reporting from Ayodhya, a nook and cranny of Ayodhya being covered by us, bringing you each and every flavor and the kind of celebration that the entire city is in the mood for as and when the 22nd approaches. Don't go anywhere, we'll be back after a very short break. Amity faculty have filed over 2,100 patents. Yet another reason why Amity has been ranked
among the top for innovation achievements. भाई इतनी बड़ी टाइल, इतनी बड़ी बड़ी हिट्स आप लोगों ने मुझे दी हैं। टाइल्स तो बड़े होने चाहिए। सुमानी मैक्स टाइल्स, टाइलों का सबसे बड़ा भाई। सुमानी मैक्स टाइल्स, जमीन से जुड़े। मिलके हम पंजाब को रंगला पंजाब बनाएंगे और बिजली के मामले में पंजाब को सरप्लस बनाएंगे। 24 घंटे बिजली रहिंदी है जी, कोई दिक्कत नहीं बिजली दी, सानू कोई प्रॉब्लम नहीं आउंदी जी। जो भी मतलब लोग सरकार नूं टैक्स जमा कराउंदे आ, वो टैक्स ही ये लग रहा जी, ते सानू संतुष्टि है सरकार तो जी। पंजाब सरकार दा, भगवंत मान जी दा बहुत बहुत धन्नवाद करते हैं जी। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਜਮਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜਮਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੈਪਟਾਪ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਜਾਣੀ ਦੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਮਾਂ ਹੀ ਭੋਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਲੱਗਦਾ। ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤਾਂ ਬਣਾਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣੂ, ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਉੱਚਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਜਿਉਣ ਦਾ ਸਤਰ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਉੱਚਾ ਪੱਧਰ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀਜ਼ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਰੱਖਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਯਕੀਨ ਕਦੇ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦਊਂਗਾ। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कर आता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना विश्व की सबसे विशाल खाद्य सुरक्षा योजना। वर्ष 2020 से देश के 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। मोदी सरकार की गारंटी, कोई गरीब अब भूखा नहीं रहेगा। अब अगले 5 वर्षों यानी 2028 तक देश की किसी भी राशन की दुकान से हर लाभार्थी को मिलेगा मुफ्त राशन। मुसीबतों की छुट्टी, मोदी की गारंटी। केंट से पानी होता है 100% प्योर। केंट आरओ प्योरिटी दिखाता भी है। केंट देता है सबसे शुद्ध पानी। जहां यादगार होता है हर एक किस्सा, इको रिट्रीट ओडिशा। आपने सोमानी का नया रोल देखा, वही स्टाइल और रेंज सोमानी बाथवेयर में भी। सोमानी बाथवेयर। PC Chandra Jewelers presents Diamond Utsav. Get 10% discount on diamond value. ₹100 off on every gram of 18-karat gold jewelry. A short gift on purchase of every diamond jewelry. Offer valid till 4th February 2024. Exchange-free jewelry insurance and EMI available. Conditions apply. PC Chandra Jewelers, a jewel of jewels. Welcome back. Prime Minister Narendra Modi unveiled commemorative postage stamps ahead of the auspicious inauguration of the Janmabhoomi Temple, set to take place on 22nd of January in Ayodhya Ram. Books of these 6 stamps have been issued around the world. Take a look at this detailed report. इन टिकटों में राम मंदिर का भव्य चित्र है, कलात्मक अभिव्यक्ति के जरिए राम भक्ति की भावना है और मंगल भवन अमंगलहारी इस लोकप्रिय चौपाई के माध्यम से राष्ट्र के मंगल की कामना है। इनमें सूर्यवंशी राम के प्रतीक
सूर्य की छवि है जो देश में नए प्रकाश का संदेश भी देता है। इनमें पुण्य नदी सरयू का चित्र भी है जो राम के आशीर्वाद से देश को सदैव गतिमान रहने का संकेत करती है। मंदिर के आंतरिक वास्तु के सौंदर्य को बड़ी बारीकी से इन डाक टिकटों पर प्रिंट किया गया है। कहीं एक नई रोड ने साइंस को शहर से गांव तक पहुंचाया ताकि पूर्णी चांद तक पहुंचने का सपना देख पाए। वो काम ही कैसा काम जिसकी खोज किसी को अपनों से दूर ले जाए। सिर्फ इसलिए रंजीत के शहर में भी एक ऑफिस बना है और हमारे जवानों के कदम कभी न रुके। सिर्फ इसलिए कहीं एक मजबूत पुल बना है। देश के नंबर 1 सीमेंट अल्ट्राटेक में हम मानते हैं इंडिया बनता रहेगा तो आगे बढ़ता रहेगा। अल्ट्राटेक सीमेंट बनेगा तो बढ़ेगा इंडिया। बादलों पे चल के हवाओं से मिलके मैं बनाऊंगा, हौसलों को कस के तूफानों से लड़के मैं बनाऊंगा मैं। स्किल, स्टील और दिल से बन रहा है भारत। AMNS इंडिया, स्मार्टर स्टील्स, ब्राइटर फ्यूचर्स। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में PM श्री स्कूलों के 404 करोड़ रुपए की लागत से होने वाले आधुनिकीकरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मैं सबसे पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभारी हूँ। शिक्षा को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के रूप में उन्होंने लागू करते हुए 2020 में पूरे देश को एक नए विजन के साथ आगे बढ़ने की एक नई प्रेरणा दी और उसी श्रृंखला का हिस्सा है PM श्री स्कूल की ये योजना। इसके साथ ही प्रोजेक्ट अलंकार के तहत माध्यमिक विद्यालयों में सुविधाओं के लिए 347 करोड़ की धनराशि भी हस्तांतरित की गई। प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए प्रतिबद्ध योगी सरकार की इस योजना का लाभ प्रदेश के लगभग 5 करोड़ बच्चों को होगा। पुलाची जाना था, अगली बस कब है? गुरुजी, सालों के बाद देख रहा हूँ तुमको। आप पोलाची जा रहे हो ना? चलिए आपको ट्रक से छोड़ देंगे। अब ट्रक में सफर करना मुश्किल है। हमारा नया टाटा सिग्ना घर जैसा आरामदायक है। टाटा मोटर्स ने बड़ी लगन और समझ से बनाया है एक नया सिग्ना कैबिन जो आपके सेफ्टी, स्टोरेज और कंफर्ट की जरूरतों को पूरा करे। अब ड्राइवर प्रोडक्टिविटी होगी और भी ज्यादा। टाटा ट्रक्स, देश के ट्रक्स। भाई इतनी बड़ी टाइल, इतनी बड़ी बड़ी हिट्स आप लोगों ने मुझे दी हैं। टाइल्स तो बड़े होने चाहिए। सुमानी मैक्स टाइल्स, टाइलों का सबसे बड़ा भाई। सुमानी मैक्स टाइल्स, जमीन से जुड़े। Helps beat sensitivity fast. Sensodyne Rapid Relief. भाई इतनी बड़ी टाइल, इतनी बड़ी बड़ी हिट्स आप लोगों ने मुझे दी हैं। टाइल्स तो बड़े होने चाहिए। सुमानी मैक्स टाइल्स, टाइलों का सबसे बड़ा भाई। सुमानी मैक्स टाइल्स, जमीन से जुड़े। सर मेंबरशिप होगा, पर मैंने तो यूज भी नहीं की। फिर तो वेस्ट हो गई। कैरी फॉरवर्ड कर दो। ऐसा कहाँ होता है? मेरी नीवा भोपाल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में। मतलब it lets me carry forward my unutilized base coverage to the next year. कि मुझे भी चाहिए। जिंदगी को क्लेम कर ले। मोदी सरकार की गारंटी, हर गरीब का मुफ्त इलाज। 55 करोड़ लोगों को दी हर साल 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की निश्चिंतता। हमारा संकल्प विकसित भारत। Gurudev, are the Muslims a part of this celebration? We are just days away from the Pran Prashishtha of the Ram Mandir. Have Muslims actually accepted the reality
What is your sense of the Muslim community? Are they truly part of this celebration, or is there a feeling of angst inside them about the Ram Temple? As far as I know, today there is very good feelings even among the Muslims. I don't see there is any such bickering. When I went and met about 1,200 imams and other religious leaders throughout the country during the mediation time, I tell you, except 2 or 3, everyone was willing to be part of it. Everyone was willing for a peaceful and happy settlement. Nobody wants to carry this on further anymore. And many of them have written, they're given in writing that they are ready to be part of peaceful settlement. Yeah. Biggest story tonight, powered by Century Club Prime. It's 4 days away for the big moment that the entire country has been waiting for decades. It's a moment that the Prime Minister says is going to unite the country like never before. It's also a moment that the Prime Minister says has a message of peace and oneness, togetherness, like he says. But then, how can we not talk and focus also on the good amount of politics, especially by those who continue to call themselves quote-unquote Ram Bhaks? But then, Akhilesh's uncle, Shivpal, is also justifying what happened on the car sevaks, the firing. And he says that was well within the constitution. We'll unravel that entire story in just a moment. Also, as always, we'll get you live coverage from Ayodhya with our team tracking that story closely. First up, the headlines, as always. Ram Lalla's idol installed inside the sanctum sanctorum today. All eyes now on the grand Pran Prashishtha. But the India alliance is going all out to mar India's big moment. Stalin Jr. provokes with a quote-unquote mosque demolition remark. Akhilesh Yadav's uncle is insulting Ram Bhaks. He also now says car sevaks fired upon to protect the constitution. Congress leader fearmongers with a Kalyug remark. Karnataka unit breaks ranks. It says will be visiting the Ram Mandir. Under lens for liquor gate, Arvind Kejriwal has skipped the enforcement directorate summons yet again. The BJP hits out. They ask, what is he even hiding? After Iran's missile attack on Balochistan, Pakistan keeps the troops on standby now. Evacuation orders have also been put in place. So how is Ayodhya decking up for the big day? There are reports that multiple people, devotees, in huge numbers, all want to be a part of the big consecration. Now, do remember that what's going to happen on the 22nd, that is this Monday, with the Pran Prashishtha, possibly could not accommodate so many people. So the administration is also trying to put up large LED screens in and around Ayodhya to ensure that all the Ram Bhaks who are heading right now to the holy city that has turned spectacular, and also more so by the evening, they are able to see and get a darshan of Ram Lalla. So we thought, why to miss the opportunity? We have our best teams tracking that story on ground zero. Let me introduce both Priyanka and Rakshita, who've been traveling the length and breadth of Ayodhya, meeting number of people, getting you stories that are stories not just of devotion, of fervor, but also stories of celebration. People who've been waiting for years together, today having a sighing of relief, and today believing that this is the moment that they all have been waiting for. Now, I do know Rakshita is at the Saryu Ghat and a lot of people and a lot of preparations behind her, Rakshita. But before I come to you, I want to take it across to Priyanka, who's at the Lata Mangeshkar Chowk, and it's a beautiful chowk, Priyanka, from where you're reporting,
The chalk itself has so much of history to talk about. Now, because both of you ladies are, those who've been picked up by Ram Lalla to be a part of this grand consecration, like I always say, Priyanka, why don't you tell us what has happened through the day today? What is expected? This is day 2 of all the ceremonies that have begun. The idol of Lord Lalla has now been installed inside the sanctum sanctorum. Give me a sense, Priyanka, first up, of what we've seen through the day. Well, yes, Deepthi, it always brings a smile to our faces when you say that. But, we'll try to give you a sense of where we are right now, because we are trying to show you the Ayodhya of today. And this is the Lata Mangeshkar Chowk, as you really very rightly pointed out, one of the most beautiful and the iconic parts of the city. And look at the number of people here. It looks like there is a celebration already that is going on. It looks like there is a festival that is already going on. And there are, as you pointed out, the stories of the people who are going to, in fact, who have been pouring into Ayodhya from the nook and crannies of the country, because they probably would not be able to be inside on the 22nd of January, but are trying to soak up as much as they can of Ayodhya, as we see around us as well in the entire Lata Mangeshkar Chowk. Hundreds of people have come out. They are just out with their family members. They are just out and outside of the darshan as well. In fact, this is the road that leads towards the temple, and that is why we also see a lot of movement of the devotees as well. So this is a very busy chalk, a hustling and bustling chalk as well, and not just of vehicles of people who are commuting to and fro from work to home or to the temple, but also vehicles like this one that you see here, Deepthi, vehicles like this one that have come not from Ayodhya but from Nagpur, from length and breadth of the country, in fact. And these are people who have come from a Padyatra. They have also, walked alongside of this entire vehicle. You can see how beautifully, in fact, this has also been lit up. And the poster of Ram Lalla that is also put up there. आप बताइए, आप लोग कितना किलोमीटर चलकर आए हैं, कितने लोग आए हैं, किस मतलब से आए हैं? अयोध्या में पूरा जश्न मन रहा है, क्या 22 जनवरी की उत्सुकता के लिए आए? वही आपको बता रहे हैं कि जो हम लोगों ने 2011 में राम जन्मभूमि अयोध्या पे मंदिर बनना चाहिए, इसलिए हम लोगों ने नागपुर से राम जन्मभूमि अयोध्या तक पद यात्रा की थी। उस समय हमारी तारीख थी 2 मार्च 2011 से लेके 14 अप्रैल 2011 तक। उस वक्त रामनवमी का दिन था। उस वक्त हम लोगों ने नागपुर से अयोध्या पैदल यात्रा आए थे। उस समय हमारा मेन उद्देश्य था कि 550 साल पुराना जो भगवान का मंदिर नहीं बन रहा था वो बनना चाहिए। इसलिए हम लोग सोच रहे थे कि सभी पार्टियां उस समय राजनीति केवल राजनीति मंदिर का मुद्दा बना के राजनीति कर रहे थे। तो हम लोगों ने उस समय सोचे कि हम लोगों को हमारे माँ बाप ने जन्म दिया है, यदि हम अपने जीवन में भगवान राम के मंदिर के लिए कुछ नहीं कर पाए तो हमारा जीवन, क्योंकि आपने राजनीति का मुद्दा छेड़ा तो मैं आपसे एक सवाल और पूछूंगी, क्योंकि हम आज पूरे दिन ये ट्रैक कर रहे थे कि किस तरह से जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं, उनके लीडर्स हैं, उनके नेता हैं, वो कई सारे बयानबाजी दे रहे थे। और अभी भी हम देख रहे हैं कि राम मंदिर के मुद्दे को पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की जा रही है, राजनीतिक रोटियां जिस तरह से कहते हैं उसको सेका जा रहा है। तो किस तरह से आप देखते हैं कि एक जो नेता है समाजवादी पार्टी के, उन्होंने ये भी जस्टिफाई करने की कोशिश की है कि कर सेवकों के ऊपर जो गोली चलाई थी वो जस्टिफाइड था, वो संविधान को बचाने के लिए? नहीं, देखिए अभी तो मेरा वो मुद्दा नहीं है। अभी पहले मैं अपना मुद्दा बताऊंगा, क्योंकि मैं यदि उनके मुद्दे पे अगर बात करूं तो आप मेरी जो 2011 की जो यात्रा है उसके बारे में आप नहीं बता पाऊंगी। इसलिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूं। पहले मेरी जो यात्रा है उसको सुनो। उस समय हम लोगों ने मंदिर बनना चाहिए, जो 550 सालों से मंदिर नहीं बन रहा था, मंदिर बनना चाहिए। इसलिए हम लोगों ने अपने धर्म के लिए नागपुर से अयोध्या पैदल यात्रा किया था। उस समय जब हम लोग सरयू में 14 तारीख को आए थे, रामनवमी के दिन, उस समय हम लोगों ने माँ सरयू में स्नान करके अपनी सिखा संकल्प बढ़ाए थे। उस समय निर्मोही अखाड़े के जो महंत थे, भास्कर दास महाराज, जगन्नाथ महाराज और रामदास महाराज, और यहाँ के जो सरपंच थे अयोध्या के, भास्कर दास जी, यह सब साक्षी थे। और उस समय हम लोग जब भगवान राम ट्रेन में थे, वो ट्रेन में हम लोग गए
तो हमने So, that is essentially the story. Thank you for sharing it, because, this is essentially how this vehicle has been lit up. And, just like him responding to not my political question, that is essentially the demeanor of all of the people of Ayodhya, who are completely, rejecting these statements, are insulated from that statement, sometimes give them a casual disregard for this statement as well, claiming that this is not a point for politicization, this is not a time for politicization. In fact, this is a time for festivals and a time for celebration. A second Diwali is what the people of Ayodhya are calling it. आप बताइए किस तरह से आप ये पूरा माहौल देख रहे हैं अयोध्या का? लता मंगेशकर चौक पे हम खड़े हैं, दूसरी दिवाली हम देख रहे हैं कि हम अयोध्या वासी कह रहे हैं कि दूसरी दिवाली मनाई जा रही है 22। मैम श्योर दूसरी दिवाली ही मनाई जा रही है मैम। एक बार राम आए थे और आज जो है मोदी और योगी जी के कर्तव्य कारण जो है फिर से हम लोग ये दूसरी दिवाली मनाने जा रहे हैं। दिवाली है नहीं, लेकिन दिवाली हम लोग मना रहे हैं पूरा अयोध्या वासी। और मैं गोरखपुर जनपद का हूँ। धन्यवाद है योगी आदित्यनाथ जी महाराज को और माननीय प्रधानमंत्री जी को, ये जो हम लोग को अयोध्या, जो हम लोग 500 वर्षों से जो है अयोध्या का दर्शन नहीं कर पाए थे, आज उन्हीं के द्वारा ये सब संभव हो पाया है। जी आप बताइए, आप भी कुछ कहना चाह रहे थे, और किस तरह से आप लोग भी देख रहे हैं कि ये जो बातें हो रही हैं, जो राजनीति हो रही है, उसको भी किस तरह से देखते हैं कि कहा जा रहा है कि ये बीजेपी का इवेंट है, कहा जा रहा है कि एक पॉलिटिकल इवेंट है, काफी लोगों को न्योता मिला है, वो न्योता ठुकरा रहे हैं, कैसे देखते हैं आप? देखिए, हर युग में रावण रहे हैं, हर युग में कंस रहे हैं। बिना रावण के और बिना कंस के भगवान को यहाँ आने की आवश्यकता ही न पड़ती। तो हम उन लोगों को धन्यवाद देते हैं जो विपक्षी हैं, जो विरोधी हैं, जो राम का विरोध करते हैं, जिनके कारण हमारे बीच में हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम आ रहे हैं। हम उनका भव्य स्वागत कर रहे हैं। और अयोध्या की जो ये छटा है, अयोध्या की जो अलौकिक दृश्य है, इसको देखकर ऐसा लग रहा है न भूतो न भविष्यति, न ऐसा कभी इतना सुंदर अयोध्या थी और न आगे ऐसा सपने में सोचा जा सकता है। इसलिए हम प्रधानमंत्री जी को और योगी आदित्यनाथ जी को भी धन्यवाद देते हैं इतनी सुंदर अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के इस भव्य उत्सव के लिए जो है। So, that essentially is the sentiment here on the ground, Deepthi. Once again, very quickly, we would like to pan our cameras and show the decorations that are going on here, the decorations that have been put up, and essentially each and every tree that has been lit up with very beautiful twinkling lights. And this all really does look like a second Diwali that is being celebrated. And this is the main road, mind you, a very hustling and bustling chowk, that is Lata Mangeshkar Chowk, a very busy street, so to speak. But even then, it is able to accommodate hundreds of people who are bearing the flags of Lord Ram, who have just come out to take pictures with their family members. And, they are in fact come from across the country as well. And very quickly, before I toss it back to you, Deepthi, this is in fact the entire Ram Path as well, where we are able to show our viewers how the Surya Stambh has also been lit up. And this essentially shows how exactly, the celebration of the 22nd of January is going on. That is the Ram Path that we are showing, the Dharm Path that we are showing, I beg your pardon. And we have the Surya Stambh that has been lit up, this entire area. So this essentially shows us and helps us understand how Ayodhya has been lit up and how Ayodhya is in fact also celebrating a second Diwali, as the Prime Minister had also said to them on 30th of December when he had inaugurated thousands of crores of projects. And this is now people waiting for the 22nd of January, completely insulated from the political statements. Back to you, Deepthi. Oh yes, and Priyanka, like one of the gentlemen that you spoke to initially said, वो सब तो बाद में बताऊंगा, पहले आप मेरी कहानी सुने. So I think that's exactly the kind of sentiment that a lot of people there on ground will have to say, because this is a moment that only and only belongs to Lord Ram. I want to see if we can get Rakshita back with us on the screens. She is also reporting, remember, just outside the Saryu Ghat. I do not see her yet on the screen, but I'll attempt to ask her a question in the hope that she can hear us. Otherwise, Priyanka, I'm going to come back to you. Rakshita, a trip to Ayodhya is never complete without the delicacies, the food. And this time around, I'm given to understand that there are special pakwans being made, there are special laddus being made, there are special gifts that already have arrived for the big day, Rakshita. So have you tasted anything? Have you seen anything? Are you feeling that in the air? I mean, what all is going on? Saryu Ghat is all well lit up.
Well, of course, just a while back we also saw the Aarti was also happening, and right now we're waiting for the light show that is going to start. Earlier we had some fountains lit up here while Priyanka was speaking. We missed out on that. There was some beautiful lightings also happening. We missed out on that as well, but we are waiting for another music and light show. Let's see when that happens. But in the meantime, you can see it's completely a devotional, devotional mood here. You can see Hanuman Chalisa being recited here right now by the people, the bhaks here. I request my camera person to pan the camera and show the Hanuman Chalisa being recited here, and many other Ram bhajans are also being recited here. You can see the light show has started. Right behind me is the light show. You can see that is the famous light show of Deepti that happens every evening. And ever since, I don't know if you can hear me, but every evening since Diwali 2023, this is happening, I'm told, every day. It's a main attraction on Saryu, a main attraction at Ram Ki Paidi every evening, attracting thousands of tourists, as we are seeing right now on our screens. You can witness this live on your screens. At now behind me are the lightings, and there will be various hymns, bhajans of Ram Lalla, and there will be sound. The tunes will be based on the music, and the lighting is based on that sound. So you can see right now on your screens is the beautiful, beautiful music